उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचें कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चियों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमेन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें। यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण, उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार के रूप में इसे मैं देखता हूं, नारी शक्ति वंदन को अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई अपवाद नहीं है। यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं। ऐसा अतीत जहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहां, जहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और सूरज, चांद, तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य हों, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हों, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मे व्हाट वी स्टडी बी रिप्रेजेंटेड, की प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं अध्यक्ष महोदय।
मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 389 424 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, आगे नए मिशनों को भी हम अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का विश्वास है। अध्यक्ष जी, अभी तो यह शुरुआत ही है, अभी तो यह शुरुआत ही है। आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Honourable Speaker. I'm honoured, really, to stand before this House and to speak on behalf of my party on a matter of great pride for Indians everywhere in the world, the success of our lunar mission, Chandrayaan-3, and according to the topic you've given us in the revised list of business, success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. I think my respected friend, Sri Rajnath Singh, treated us to a lecture on a slightly different subject. But on August 23rd, Mr. Speaker, we scripted history as our unmanned moon mission's lander module made a flawless soft landing, making us only the 4th country to achieve this feat and the first to reach the uncharted south pole of Earth's only natural satellite, the moon. It is fitting, sir, that as you proposed, we observe August 23rd as National Space Day in future. How far we have come since the late 1950s, when a classic photograph by Henri Cartier-Bresson showed Indian rocket parts being transported on a bullock cart. Let me take you back, sir, nonetheless, to when our nation's scientists, led by Dr. Vikram Sarabhai, began to develop the contours of India's nation space program in the early 1960s. Back then, the coastal village of Thumba, in the outskirts of Thiruvananthapuram, was identified as an ideal location, given its latitude and natural geological features, to allow for rocket launches and allied research. Imagine, friends in this House, a sleepy village with golden beaches and palm-fringed coconut trees, populated largely by an overwhelmingly Catholic community of fisherfolk. The catch, however, was that the community of scientists had identified a piece of an area of land, which housed in Thumba the St. Mary Magdalene Church and the residence of the bishop himself, Peter Bernard Pereira, his own official residence. Now, in any other community or any other part of the world, even, the matter might have been put to rest right there. After all, the idea, the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury, especially in today's India. But in this relatively obscure part of India near Thiruvananthapuram, where a decision of national importance and scientific progress presented itself, the community chose to make a remarkably patriotic choice.
a choice for development and progress. When initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway, something special happened. One day, when Bishop Pereira was sitting in his little office in the church, he heard a knock on the door. He said, "Who is this?" And a man in a white suit came and said, "I am Dr. Vikram Sarabhai." Dr. Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientists, and he told Dr. Sarabhai, "Come to my church on the following Sunday." So during the Sunday service, Dr. Sarabhai was there, and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. "My children," he said, "I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live in for the work of space science research. Dear children," he said, "science seeks truth by reasoning. In one way, science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people. My children, can we give God's abode for a scientific mission?" The answer from the congregation was quite literally a resounding Amen. The church and the bishop's house, as well as other neighbouring inhabited areas, were handed over without protest to Dr. Sarabhai and his team. Thus was established in 1962 the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, which would later be renamed Vikram Sarabhai Space Centre after the death of the legendary Dr. Sarabhai 9 years later. A year after TRLS was established, India launched its first two-stage rocket, our first foray into space, from Thiruvananthapuram. As our late President, Dr. APJ Abdul Kalam, who was part of the original launch team in 1963, and he went on to work from the church building himself, he wrote later, looking back at this remarkable episode, "Today among us, Professor Vikram Sarabhai is not there, Reverend Dr. Bernard Peter Pereira is not there, but those who are responsible for the creation and make the flower and blossom will themselves be a different kind of flower, as described in the Bhagavad Gita," he said, and he quotes the Gita, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely of its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities." That is what a lot of ISRO's foundations have been, sir. Unassuming, but with the power to change the world. One of the world's oldest and most ambitious, it arose from the physical research laboratory established in Ahmedabad in 1947, the year of our independence and the brutal partition with Pakistan. Our visionary first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, then created the Indian National Committee for Space Research, or INCOSPA, marking our country's official entry into space exploration. This committee was set up on the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet for the promotion and exploration of space and its utilization for peaceful purposes, a committee led by the legendary Homi Bhabha. Then, in 1962, as we've seen, TRLS was established. On 15th August 1969, our 22nd Independence Day, under the trusted guidance of Vikram Sarabhai, INCOSPAR and TRLS became the Indian Space Research Organization, ISRO giving Indian space a developmental boost. There was a tragic setback, as I mentioned, when Dr. Sarabhai died suddenly of a heart attack at the age of just 52. Dr. Satish Dhawan, the head of the Indian Institute of Science in Bangalore, was invited by then Prime Minister Indira Gandhi to lead the organization, because she knew that the vision and legacy of Vikram Sarabhai could only be fulfilled by someone like Dhawan. He accepted the invitation, though on condition that the headquarters be shifted to Bangalore, and guided ISRO as a leader who is still admired by many. In July of 1979, sir, our first satellite launch vehicle failed, and Mr. Dhawan, an exemplary leader, took responsibility for it. He gave a statement saying, "Dear friends, we have failed today. I want to support my technologists, my scientists, my staff, so that next year they succeed." The very next year, they did succeed. This is ISRO's history.
every setback became a stepping stone to greater success. And so we Indians are proud of our space program for good reason. Since then, ISRO has undertaken missions to the Moon, Chandrayaan 1, 2 and 3, and the failure of 2 became a stepping stone to the success of 3, to Mars, the Mangalyaan Mars Orbiter mission, and we have created our own launch vehicles and satellites. Moreover, of course, as the Speaker has said, India launched the Solar Observatory Aditya L1 this month and aims to put 2 or 3 people into low Earth orbits by the end of this year, to emulate the legendary Rakesh Sharma, who orbited the planet on a Soviet spacecraft in 1984. Notably, Indian space research is the only program which has been a civilian program from the very beginning. We are focused on the development angle, like the use of space for rural development, weather forecasting and communication, in addition to high-end research. And this, sir, is just the beginning. India's space program is set literally to skyrocket. Experts predict that India could account for at least 10% of the global space economy in the next decade, up sharply from 2% currently. India's space program bolsters our development, having made important contributions even in seemingly unrelated areas such as disaster management, education, healthcare, agriculture, fisheries and urban planning. Moreover, it serves India's global diplomacy as well, sir, enhancing our credibility and influence. Those who once scoffed at the idea that a poor developing country aspired to send rockets into space must concede that India is now a technological force to be reckoned with in the world. To my mind, there is yet another sterling triumph within India's Chandrayaan moment. It has become a good occasion to recognize the alumni of unsung engineering colleges everywhere in India. Indians are rightly and justifiably obsessed with the IITs, but Chandrayaan 3's landing, especially 4 years after the failure of Chandrayaan 2, was attributable to many, many scientists from far less glamorous educational backgrounds. While the ISRO chairman, S. Somnath, is a product of TKM College of Engineering in Kollam, represented by my friend Premachandran, at least 8 of his other colleagues graduated from the College of Engineering, CET, Thiruvananthapuram. Somnath Institution was founded in 1956 by a successful Muslim cashew merchant, Tangal Kunju Musliar, abbreviated soon enough to TKM, and has gone on to establish a stellar local reputation, while CET in my constituency, established in 1939 as the first engineering college in then Travancore State, retains its record and repute as the premier engineering college in the state of Kerala. Yes, at least 7 more engineers from CET were involved in the Chandrayaan 3 success, and there were others, alumni from small engineering colleges in Tamil Nadu, in small towns throughout India. We've had graduates of these small colleges contributing to ISRO because, let's face it, we must yes, indeed, it was in the very first launch, Dr. Abdul Kalam. We must proudly salute these alumni of unsung engineering colleges because they serve the public sector with dedication and are the backbone of national enterprises like ISRO. As I wrote on social media at that time, if IITians went to Silicon Valley, CETians took us to the moon. I would also like to point out that many of the stalwarts in our space program have been women scientists and engineers. Some 20% of ISRO's key personnel are women. And as women increasingly excel in science and technology studies, this number may only go up. And unlike in our parliament or legislative assemblies, they won't even need reservations either, sir. I can tell you from my experience of addressing many convocations, I'm in favor. But I have been giving away prizes at many convocations of science and technology and engineering colleges. And even when the women students are a small minority, maybe 20–30% of the student body, there are 90% of the medal winners, prize winners, and honours winners. This is becoming increasingly a woman's field, and we'll all be the better for it, sir. Now, the only thing that disappoints me today is that some in the government seek to make this their moment to bask in glory
and polarize the country by speaking as if all space endeavors only began in 2014. First in the ancient years of the Vedas, and then in 2014. I mean, that's what we're hearing today. Now, the truth is, sir, that our space successes are a consequence of continuity in our national governance, and what has been achieved today stands on the shoulders of many past achievements, as I have described to you with my stories earlier. Any mature democracy would recognize that grooming the brilliance of our scientists, developing infrastructure, R&D, and global synergies on technology cannot be achieved unilaterally by any one government. This is the achievement of successive years of making the right governance choices. For example, we've heard so much about Aditya L1 mission. It began in 2006, sir. It took 17 years to be conceived, planned, executed, and finally launched this year. Thus, the Chandrayaan triumph is truly pan-Indian. Across, I hope, the political divide, it does not belong to any one person or any one party. If we all came together yesterday to affirm the solidarity we all feel for women's reservation bill, let us also come together, sir, to recognize the collective contributions of all governments in bringing glory to India's space endeavors. But after all, who can deny India owes its remarkable progress in space exploration in large part to Pandit Nehru's dedication to developing a scientific temper amongst the Indian people, his understanding of technology's role in national development, and his faith in the country's scientists. Though India was indeed beset by poverty, illiteracy, food insecurity, and disease, Nehru knew that it must and could aim for the stars. We did not have much money, and we relied on ourselves. Nehru's doctrine of self-reliance, though he didn't use the word Atmanirbharta, the concept was there, within very tight budgetary constraints, had an enduring influence on India's space program, exemplified by ISRO's decision, even in this Chandrayaan 3, to take a slower, fuel-saving approach to the moon. Both Mangalyaan and Chandrayaan 3 were the least expensive ventures of their kind, costing about a tenth of equivalent NASA, NASA, the American space missions. They cost less even than Hollywood depictions of space. Mangalyaan costs less than the Hollywood film Gravity, and Chandrayaan costs less than Interstellar. The shoestring budget was only 615 crore. Not just, much cheaper than G20, what our government spent on it. But this is not just a small fraction of what the US spent, but not even a third of China's budget for its own moon mission. ISRO's last 40 years spending is equivalent to NASA's 6 months of expenditure. That is the history we have to understand, sir. But they should not be punished for it. I'm looking at my good friend Jitendra Singh there. The Department of Space's budget has shockingly been slashed by 8%, down to 12,552 crore, from the 13,700 crore that we were all presented in the budget estimates, sir. The cuts are highest in space technology, including the Human Spaceflight Center, as well as developmental and operational projects involving satellite launch vehicles. And space science, including space missions, has been cut by 32%. Why? NASA, sir, has been allocated $25.4 billion in 2023, and ISRO has the equivalent of $1.5 billion. That is the situation, sir. Our government needs to be more generous. Now, I want to stress that ISRO's strengths extend well beyond frugality. For Chandrayaan 3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft: orbiters, landers, rovers. The Chandrayaan 3 rover is rudimentary, but it speaks to an important focus area for the Indian space program, the planning and implementation of high-tech scientific missions. The data from Chandrayaan 3's scientific instruments will be crucial, because the mission will be the first to physically, chemically, and thermally characterize the soil, subsoil, and air near the moon's south pole on location. No other country has done this. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries, and it should press the advantage by going to more places in the solar system.
And of course, we must conduct stellar science. The better space-based scientific instruments currently operated by India are largely concerned with Earth observation and remote sensing. With a focus on indigenous development of technologies and techniques, we have become a premier manufacturer of both launch vehicles and satellites and a sought-after provider of low-cost launch services to other countries. Our Polar satellite launch vehicle, with 24 successful flights, has a proven track record, and the world record that has been mentioned of the launch of 104 satellites in one go has already been applauded by the Honourable Speaker. So we have all of this to talk about. Chandrayaan-3's success strengthens the confidence with which India faces the world. The country has spent the year, as we all know, presiding over the G20, though, as has been pointed out by my colleagues, we spent much more on it than we did on ISRO or on the Chandrayaan mission. But it is an influential voice for the global south. This adds to our prestige and our clout. We are also playing leading roles in other international bodies. How these relationships and how our global role generally, more broadly, will evolve remains to be seen. We are having unfortunate controversies going on this week with Canada. But nonetheless, the country's achievements in space undoubtedly strengthen our diplomatic hand, not least because of the respect they inspire in other countries. Thank you. I'll just take 2-3 minutes, sir. Among the foreign countries that have used India's space program to launch their own satellites and benefit from space cooperation include France, a space partner since 1964, which has supported India's development of launch vehicle satellites, applications and spaceflight, has also launched several satellites using our PSLV and GSLV. Russia, another long-term collaborator on various aspects of space exploration, including some of these same things, and Russia supplied key components for the crew module of Gaganyaan, and the US, with which India has a strategic partnership in space, covering areas such as Earth observation, satellite navigation, space science, planetary exploration, launch services, and human spaceflight. So France, Russia, and the US are all involved with us. And ISRO tells us that India has pursued bilateral and multilateral relations with space agencies and space-related bodies, with the aim also of strengthening existing ties with these countries, taking up new scientific and technological challenges, refining our space policies, and defining international frameworks for exploitation and utilization of outer space for peaceful purposes. This is the diplomatic strength I'm talking about. So the US, Israel, Singapore, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Luxembourg, the Netherlands, South Korea, the UK have all launched their satellites using our Indian PSLV and GSLV. And as a result, the government has earned $174 million from these launches alone. It's all the more a pity that our government has trimmed the budget for space education and research between last year and this one, even though on the whole our expenditure on space has gone up, and I know Jitendra will tell us that. Educating the next generation of Indian space pioneers ought to receive more funding. I'll conclude, sir, by recalling the proud moment when India's lander touched down on the moon and Prime Minister Narendra Modi wisely resisted parochial triumphalism of the kind we've seen later, and he hailed the achievement as a victory for all of humanity. But he also correctly noted that the achievement mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians. By showcasing its technological prowess, India's space program reminds the world not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas, from cyberspace regulation to peacekeeping. Looking up at the sky after Chandrayaan-3, Indians can contemplate a glorious global future. We are showing the world that India can be a standard setter rather than just a follower of rules made by developed countries. New horizons beckon, for the world is now our canvas, or should I even say, the whole universe. Jai Hind, sir. Thank you very much. कुछ आपको कहना है क्या? Okay. We are at home now. We are at home now. It's not my speech. Okay. So, She's member also. No, I'm just wanting to intervene for a minute. It's just an intervention. Have patience. Have patience. Just something very important. Please. Sir, I want to make an observation, sir. Dr. Shashi Tharoor ji,
You're a very learned and senior member. It's very enriching to listen to his ideas every time he participates in the debate. So you said a lot of good things, sir. But I didn't want to disrupt him in the middle of his speech, but I hope I heard you correctly. You said something in between which I don't much agree to. So you mentioned, if I heard you correctly, I repeat, that there are lots of women, there are lots of girls who are entering the field of science and technology, and hopefully we would see many of them working under our space programs. So unlike our parliament, they wouldn't need reservation to be a part of the space program. I don't much agree to this, sir. It's not very appropriate. Okay. Please take it in a healthy light, sir. Okay, Just okay. yesterday, no, listen to me, sir. Let me complete. Just yesterday, we passed a very historic bill providing reservation to women inside the parliament. So it doesn't sound very appropriate because, no, women don't just have these here because of their capabilities and competence, and we should never. नहीं, ये इस ढंग से डिबेट तो नहीं चल सकती. नो प्लीज सिट डाउन. हाँ, जा बस क्विक आप बैठ तो जाइए. नहीं आप बैठ जाइए. Sir, your आप party बैठ जाइए. has supported this आप बैठ very जाइए. historic bill, श्री sir, ए राजा, which please. means you agree to the Okay, idea okay. of providing reservation to women for them बैठ to जाइए. reach इतना bigger. जी आप बैठिए प्लीज. ओनली ए राजा, ओनली नो आप भी बैठ जाइए. बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज. मिस्टर ए राजा, नो एक सेकेंड. मिस्टर थरूर बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए. नो भाई. अधीर जी आप बैठिए. आप बैठ जाइए. आप बैठिए तो सही. आप भी बैठ जाइए मैम. नथिंग इज गोइंग ऑन नाउ. ओके नाउ प्लीज. एक सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप बैठिए ना. I would like to clarify, since the minister, the honourable minister, who is also a good friend, appears to have misunderstood the thrust of my remarks. I would like to clarify that I meant no disrespect to either women in general or the very many honourable women in this House who have been elected without any benefit of reservation for all these years. Okay. We have said, sir, that we need reservation because the numbers are not enough. And that is why we passed the Women's Reservation Bill yesterday. I'm saying that in science and technology, we already have 20% in ISRO and the numbers are going up, sir. That's my point. That's it. Thank you. जी सर हो गया. कुछ कहना है आपको क्या? सर अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है we need not carry this further because I'm very sure and I trust my friend Shashi ji has never been anti-woman. जी Mr. Chairman, sir. ओके लेट. ठीक है. Mr. Chairman, sir. It should be in good humor I must always. express Yes, my gratitude. Please. Mr. Chairman, sir, I must express my gratitude to invite me to speak on this important issue. Sir. चंद्रमा पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए. हाँ जी प्लीज. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. इतना हंगामा नहीं होना चाहिए. ना प्लीज मिस्टर ए राजा, ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली. प्लीज. आप बोलिए ना. सर, how can you speak, sir? अरे नहीं, यू कैन स्पीक. आप बोलिए. House must come for order. बैठिए. आप बैठ जाइए प्लीज. यू आर नॉट हेल्पिंग द चेयर. आप बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए. हाँ प्लीज. सर. अरे भाई
Sir. Sir. बैठ जाइए. Now please, Mr. A. Raja. Mr. A. Raja. बैठिए आप. ये अनावश्यक है. नो नो नो, प्लीज बैठ जाइए. आप बोलिए. Sir, yesterday also the same thing. Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, what? Started speaking. Sir, the chair should give us protection. Sir, what is this? Sir, every time they do this, sir. Please. A. Raja, बोलिए. Sir. बोलिए. बोलिए. I must express my gratitude for granting me this opportunity to say a few words on Chandrayaan. Sir, of course, I decided not to speak because of my health. More specifically, the throat is not cooperating with my voice. However, having heard the speech which was delivered by the Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji, I am confined to stand before few minutes before this August House. Sir, the Prime Minister was yesterday very magnanimous that no one can claim exclusive credit for Chandrayaan. It is a common efforts, endeavors put by the team of our scientists with political and scientific will. Sir, in spite of that, we must be very magnanimous on behalf of DMK. The role of the Prime Minister or this government bringing this Chandrayaan 3 cannot be undermined. We want to wish and greet the government. Sir, I will come to later part. Once universe and galaxy was treated as a riddle for mankind. Till 1950s. In 1950s, various countries, including USA, used to send satellites to the moon and other planets. Thereafter Russia, thereafter China. No doubt, an exact position India has got today because of Chandrayaan that has been launched and smooth landed was effected. Sir, the parity which we claim today along with America and Russia and China will give a message that India is second to none to anybody in the space research hereafter. Sir, between 1957 to 58, when Soviet Union launched Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, and the US launched Alpha, Pandit Jawaharlal Nehru shared with his view in the parliament that this is a new age of Sputnik. Sir, I must share this house that Tamil is one of the classical language recognized by the world and this government. Sir, Tamil has deep-rooted scientific measures in the literature. Since the Honorable Defence Minister says the Sanskrit is having such a tremendous potentiality in science, I am not defaming any language. Admittedly, this country is having two culture based on the Tamil and Sanskrit. The C.P. Ramasamy is a known educationalist who served as a Vice Chancellor, later the Diwan of Tiruvangur. Maybe Sasi may be well aware about his knowledge and prowess. He admitted that there are two cultures in the country. One is headed by Sanskrit by way of Aryan culture, and one is Tamil in the basis of the Dravidian culture. Sir, I am entitled, having said the Defence Minister, now I am entitled to say what Dravidian and Tamil language says about science. Sir, you cannot imagine. When I read Tolkappiyam, that is 3,500 years back, nobody can believe. It says this country was not created by a single man. This country was produced by evaluation of science. How? Nilam, Neer, Thi, Vali, Visumbodu, Kalanda, Aindin, Mayakam, Ivulaham. What does it mean in English? Sir, there is a metabolical change out of water
land, fire, air and space, what we call Panchabhutas. Panchabhutas. The entire world that has been made because of these Panchabhutas, you cannot create a new thing. New building has come. Does it mean to say Delhi weight has gone? No. For this bench, somewhere else a tree has been cut off. So this is the science which was later, after all 200 years back, it was scientifically put into a proper phrase that the weight of the universe is constant by Newton. 300 years back, English law says by Newton that the weight of the universe is constant. But whereas 3,500 years back, Nilam, Ti, Neer, Vali, Visumbu, Aindodu Kalanda Mayakam, metabolical change of the water, land, space, everything. So, are we not entitled to have pride for 3,000 years back? You should be. Sir, Tiruvalluvar. Everybody believed that the earth is static. Other planets are revolving around, including sun. It was believed, even in the Christianity, even in the Hinduism, even in the Islam. But 2,500 years back, he said, Sulandrum erpinnadu ulagam, ulandrum ulave thalai. He said, the earth is revolving. Earth is revolving 2,000 years back, Tiruvalluvar says. In spite of that, it is at the biggest of agriculture, at the biggest of plowing. This is a science. Sir, our Bharati, last century, early century, he said, Vana yalappo, kadal meena yalappo, sandira mandalathu iyal kandu thelivom. Vana yalappo, what does it mean? We will measure the space. Poet Bharati, who is a scholar in Sanskrit, he said in Tamil, Vana yalappo, we will measure the space. Kadal meena yalappo, we will measure the sea and fishes. Then ocean. Then the Chandra Mandalathu iyal kandu thelivom. We will study and research the moon, which will be benefit to the mankind. These are all the Tamil literature. You cannot find Tamil literature as far as science. You cannot say one incident that the language Tamil is traveling as against the science. Sir, Bharati is being a Tamil and Sanskrit scholar. In spite of that, when the science comes, he did not shut down the mythological. He did not stick on the mythological value. Sir, today I am very proud as a student of Dravidian School of Thought, which was designed by Periyar EVR, and it was articulated by Dr. Annadurai, and it came to power after Kalaignar, respected our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. Along with them, today, the number one Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, we welcome the measures that has been taken by the government to put the Chandrayaan in the correct orbit. By putting the Chandrayaan in the correct orbit, the mythological illusion that has been removed, that is a success of the Dravidian story, Dravidian concept. Sir, by this time, I must extend my congratulations to the all scientists, those who involved in the scientific team, in the space, more specifically the contribution of Tamilian. In Chandrayaan 1, Mailsami Annadurai. In Chandrayaan 2, Sivam. In Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. Sir, these people are very proud. These people are not even went to private schools, private colleges. They belong to OBC. Very ordinary. They came from very ordinary gullible mass and studied in the government school. In spite of that, they contributed that India has reached the moon because of not the students from convent, not from the students of any other exalted institution abroad, by the government colleges and government schools. Sir, they did not know Hindi and Sanskrit. These scientists did not know Sanskrit and Hindi. They know only Tamil and English. In spite of that, they exalted such a position. Sir, I am looking back the history of space research since 1952, as put in my friend Shashi Tharoor. Sir, rightly he said, when Indian National Committee for Space Research, INCSR, was set up by the Pandit Jawaharlal Nehru, under the chairmanship of Vikram Sarabhai, and later it was developed to renamed as ISRO. Sir, I am disturbed when such a remarkable phenomenon took place and the nation got pride. We must introspect other mode of thoughts and views. Sir, I heard the defense minister very patiently. I recall
my memories and check it up with the documents in the parliament. Just 1 hour back. In 2004, in my 30s, I was Minister of State Health in the Council of Ministers headed by Vajpayee, Dr. Vajpayee. He is known for protecting the Raj Dharma in politics. Sir, that time, a debate was brought by the honorable member from Andhra, Jaipal Reddy, a veteran leader in Congress. The motion is, drop the 3 cabinet ministers from the cabinet. One of the person he named is Murali Manohar Joshi, then the HRD minister. Sir, the motion was moved by Jaipal Reddy. The house was rapt attention. Murali Manohar Joshi was there. Atal Bihari Vajpayee was there. Then the Arun Jaitley said, I quote, I have always regarded Dr. Murali Manohar Joshi as a genius scholar, but my philosophical problem with him is that he is confused himself, history with mythology, philosophy with theology, astronomy with astronomy. And he further went, Mr. Joshi, you want to change the syllabus and you want to give a saffron syllabus for the students. I am entitled to call, he said, I am entitled to call you in the house that you are a textbook terrorist. Unquote. Sir, I was part of the government, in BJP government, no doubt. The reason is something different. This is not the place to elucidate. Nothing is different. But sir, the accusation that has been made, the accusation that was made by the Murali Manohar Joshi still continues in the mouth of Defense Minister Rajnath Singh. Sir, no doubt, government has done a great job. When the satellites were successfully sent by the America and Russia, Prime Minister Nehru wrote to all chief ministers, please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers, I quote, intrusion of the man into outer space, and unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed and religion and national conflicts which have no meaning in this new age of science and space, unquote. Sir, when the Chandrayaan sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradictions. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which was a dream for us. It was completely stopped because of mythology, not for science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, sir, nothing. क्या point of order है? Indian Constitution. Sir, I will finish 1 minute. No. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए मैम. आप बैठिए. आर्टिकल 25. जी. भारत का संविधान 25 सर, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे. ये भारत का संविधान कहता है. ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं. हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए. बैठिए. ओके. देख लेंगे इसको, देख लेंगे. बैठ जाइए. जी. बैठिए. Mr. Raja, please. Mr. Raja, now please continue. Continue. And be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things. Please. Okay. No. Please, बैठ जाइए. Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken here. आप चलिए बोलिए. Please, you continue, please. Sir. Okay.
ठीक है, बैठिए, बोलिए सर, जी जी जी, बोलिए. Sir, We should be Sir. careful. We should be careful. sir. I am repeating the Sir. words. Sometimes mythology Sir, and history, amongst they are the- mixed. sir. They are mixed. Yes, sir. So I am not doing it. Sir, I am not. I am In not our speaking anything nation, wrong. in our country, no. Sir. It is a tradition Sir. to tell the history through mythology. It is also a tradition Sir. there. Please now. Sir, without any Balu sir, reservation. you are very senior, sir. Sir, Please. without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going. As a superpower of fourth place. After USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, sir, my heart is, sir, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan 3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch the scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter No. ever. Please. आप बैठिए ना, आप बैठिए. बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel बैठिए. it. No. You repel it. There could be different interpretation repel also. it. Mr. Raja, there could be different Sir. interpretation also. Please Sir. don't go into those details. Please. This is a minute problem for our. Sir, No. sir, when I am seeing, sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe, and another man is moving the gold. Is there scientific? No, Mr. Raja, please. Sir, No. sir, It doesn't mean like that. No, Sir. please. Sir. It doesn't mean like that. To help Sir, some sir, barber. sir. To help some. No. Sir, Austin will. Okay. Sir. Ji. Sir. नहीं अब बैठिए. देखिए ये एक सेकंड. Austin, ये no. मैं मेरा एक आपसे sir, निवेदन I है. will complete after that. You can. जी चलिए. Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, I am finally, sir, I plead, government, don't give any unscientific color to Chandrayaan. Yes. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of. Please. Now I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai name for Chandrayaan 3. Thank you. Yes. Very good. श्री स्वागत राय जी. Sir, I rise to speak. On the पिछले बार क्या बोले थे याद है फिर बोले क्या Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO
देखिए एक सेकंड, जब आपका बोलने का सुनिए, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। प्लीज लिसन, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपको अवसर मिलेगा बोलने का। माननीय शांत बैठिए विदुड़ी जी, नो, बैठ जाइए आप। आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा। अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप, प्लीज। Sir, प्लीज। I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention. अब बोलिए। I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम, ताला बोल नहीं, भाषण दो ना। नहीं, प्लीज, अगर सकते हो तो भाषण दो। They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please, Sir, आप तो दादा, you know the delicacy of the things. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda. Every scientist, Sir, from any region, when any we are part of seeing- India, he was Indian scientist. Ji, please. When we are seeing Okay. Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru. Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There is no connection between the two. Sir, You continue on the. I want to say, I am not Indian. Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana, the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians, I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science.
in 62, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 64. In 69, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up. And in 72, when Indira Gandhi was still Prime Minister, the Department of Space was set up. So whatever is happening today is continuation of what Dr. Vikram Sarabhai started in 1962. His legacy. He unfortunately died in 1971 in Thumba, the space which he liked so much. So now, India has... Arey, chup karo. Sir, chup karo. Sir, India got the first success in Aryabhatta, which was completely designed and fabricated in India and launched by a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar on 19th April 1975. ISRO has successfully launched almost 150 satellites since 1975. Sir, ISRO has established major space systems for communication, television broadcasting, meteorological services, resources monitoring and management, space-based navigation services. ISRO has its headquarters in Bengaluru. Its facility spreads across various centers. Launch vehicles are built at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. Satellites are designed and developed at U.R. Rao Satellite Center, Bengaluru. Integration of launching of satellites and launch vehicles are carried out from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Development of liquid stages, including cryogenic state, very cold state, is done in Liquid Propulsion Laboratory at Bengaluru. ISRO has carried out 125 spacecraft missions and planned several missions including Gaganayan, an interplanetary mission such as Chandrayaan, Lupex, Shukrayan and Mangalayan, MOM-2. Sir, ISRO, our own organization, it has surpassed NASA in efficiency, resourcefulness and cost effectiveness. In 2005, NASA launched the solar mission that cost $550 billion. Now ISRO is planning to launch the similar solar mission, Aditya L1, at a cost of $55 million only. That is 1/10 of the cost of NASA. There are 4 types of satellites sent by ISRO. One is communication satellites, which helps our communication system. 2 is Earth observation satellite, which take the pictures of the Earth. 3 is navigational satellite, and 4 is astronomical satellite. These works are going on. What is great about Chandrayaan, that so far we are using rockets to send satellites around the Earth. They are called either geosynchronized satellites, that means speeding at the same speed as Earth, or the polar satellite launch vehicles, which are placed fixed in the poles. Now, for the first time, sir, we have gone that from a satellite, our rocket has taken a lander mission, lander and a rover, onto the surface of the moon. We failed in Chandrayaan-2. Our lander crash landed, but this time there was no
crash, the lander landed very softly. For one day, it sent the messages from moon, but then it had to be jettisoned. We are very happy, all of us, that India has achieved this. But we must have things in perspective. We are talking of a moon, not a moon landing, sending a lander in moon. There is a propulsion module and there is a landing module. Propulsion module takes it from the Earth orbit into the moon. Then landing module goes to the moon surface. Sir, I must remind you, आपको याद दिलाने चाहता हूं कि 57 में मैं बोला सोवियत स्पुतनिक भेजा, हम अभी मून में एक तो सॉफ्ट लैंडर भेजा 1969 में. आज से 54 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग stepped on the moon as a man. Stepped on the moon. He said, it's a small step for me, but a giant step for mankind. Giant leap for the mankind. So, हम लोग 54 नहीं है, तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. लेकिन हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है ये बहुत सर्विस दिया. दे प्रिडिक्ट वेदर, कब तूफान आ रहा है, दे प्रिडिक्ट क्रॉप डेवलपमेंट, एंड दे GPS, our taxi walas use GPS now. That is also based on satellite tracking. So I want to say that Chandrayaan 3 has demonstrated safe and soft landing on the lunar surface. It has demonstrated rover roving onto the moon. Thoda hi gaya, and to conduct in situ scientific experiments. What are the technologies there? Altimeters, laser-based altimeters, velocimeters, inertial measurement with laser gyro-based surface, propulsion system, navigational guidance and control, hazard detection and avoidance, and landing leg mechanism. ये सब हम इंडिया में डेवलप किया. यही हमारा गर्व की बात है. गर्व से बोलो, ये लैंडर पेलोड, इसमें चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, Langmuir probe to estimate the plasma density and its variation. So, itna sir, I am concluding. I am not discussing anything controversial. तो मुझे बोलने दिया जाए. अग्रवाल जी, चेयरमैन साहब, सर मुझे यही कहना है कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत दूर जाने पड़ेगा. See, we have not mentioned, nobody has mentioned Kalpana Chawla. She went by the Columbia Space Shuttle. Her craft exploded in 2003, and she, along with 7 others, died. Today I pay respect to Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut. सर, आज क्या है? 1 साल पूरा हुआ. क्या? किसका? फ्रैंक रूबियो, एक नासा के एस्ट्रोनॉट है. वो 1 साल स्पेस में है. 1 साल
इंसान स्पेस में है, is set to return to our Earth this fall after setting the record for the longest single space flight by astronaut. He arrived at the International Space Station 21st September 2022 and will return home after 371 days in space. Rubio and his fellow crew members conducted dozens of scientific investigation and technology demonstration. सर, ये नासा 58 में सेटअप हुआ. उस समय सोवियत यूनियन आगे था. वो पहले स्पुतनिक भेजा, पहले मैन ऑन द मून भेजा, पहले मैन ऑन द मून नहीं, मैन इन स्पेस भेजा, वुमेन इन द स्पेस. लाइका मर गया, लेकिन वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहुंच गया. तो हमारा लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य सिनेमा देखे होंगे ऋतिक रोशन का. लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य यही है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे. देश में जो कुसंस्कार है इन लोग का बीच, ये दूर करेंगे. देश को विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएंगे जी. तभी हमारा काम पूरा होगा. सर, अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है. वो उधर ही रहता है, खाता है, ऐसा जैसा घर है. फ्रैंक रूबियो ऐसा किया है. अभी भी चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया. 2 अमेरिकन हैव 1, चाइनीज हैव 1. सो चाइनीज भी स्पेस स्टेशन. नाउ प्लीज, बहुत सारे काम करना है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा. अभी एक और वक्ता है आपके. वन मोर स्पीकर इज देयर कोरोना पार्टी जी. सर, हमको यही कहना है कि हमारा रैंक अभी 6th है. किसका पीछे? नासा, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड चाइना. चाइना बहुत आगे बढ़ गया है. सर, आज इसलिए इस चर्चा में मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करता हूं. थैंक यू. इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूं. ये हमारा स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए. डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रणाम करता हूं. और हमारा सतीश धवन और युवा राव, इन लोगों को प्रणाम करता हूं. ये सब लोग मिलके हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाया. ये बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू. थैंक यू. लक्ष्य में श्री लाबू श्री कृष्ण जी. चलिए अब बैठिए. आप जब आए तो बोलिएगा इस बात को. जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब इस बात को बोलिएगा जी. प्लीज डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. देख लेंगे उसको. ठीक है, देख लेंगे उसको. यदि आपत्तिजनक बात है तो उसको देख लिया जाएगा. ना प्लीज लवशिक सर, देख लेते हैं उसको. देख लेंगे. ना प्लीज सर, डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. इट्स गुड टू सी you in the new chair in the new parliament, sir. I thank my party floor leader, Mithun Reddy Garu, for allowing me to speak on the second day of the inauguration of this new parliament building, sir. From YSR Congress and also from all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, we thank the achievements of ISRO. We congratulate the achievements of ISRO. We are indebted to all the scientific achievements they have done in the last 70 or so years, sir. When I was asked to speak on this subject, the first quote that came to my mind was of Isaac Newton, sir, when he said, I was able to see further because I was standing on the shoulders of the giants, sir. We were able to achieve Chandrayaan mission because there were so many people that have contributed to it. Just now, Professor Dada has mentioned about Vikram Sarabhai
Satish Dhawan, U.R. Rao, Madhavan Nair, Kastur Rangan, because of what they've achieved in the last 65 to 70 years. Shivan, all these people have achieved and contributed to the frontiers of the space exploration, sir. Because of them, we were able to achieve Chandrayaan mission to the moon, sir. And I also congratulate Somnath and his team, who was able to place a lander on the far side of the moon, sir. When I was watching it as a tech geek, like all of us, I was so happy for three different reasons, sir. The first one was, it was launched from Sriharikota, Andhra Pradesh. It's my Telugu land, sir. And it has been found to be lucky for all the launches, and they've all been successful, sir. And the second reason that I'm really happy was because of when I was going through the profiles of all the contributors for this success, all the scientists who were involved in this, majority of them came from state universities, sir, or engineering colleges run by state governments, sir. It was a great achievement. They didn't come from any IITs or NITs, sir. They just came from the state-run universities, sir. Third thing that we all should be happy is the participation of women in this endeavor, sir. They all dressed in kanchi saris very beautifully, but they were having that vigor to make sure that our Chandrayaan mission was very successful, sir. But there are a lot of questions raised, not in the Western media, sir, why India is doing this activity when there's so much poverty in the country. For them, sir, there are three reasons. The first one being, we want to cross the frontiers of the science and space exploration, sir. It won't happen just like that, sir. Take, for example, as Dada was mentioning earlier, in 1965, we were human was able to land on the moon, sir. But from the last 50 or 55 years, the space exploration of most of the countries has actually gone back, sir. We think just because we have something like an iPhone in our hand, iPhone 1 to iPhone 15 actually accidentally happens. But it doesn't happen like that, sir. Unless some sort of impetus is given, some sort of iteration is given at some point of time, it doesn't happen just accidentally, sir. That's what has been happening in the space exploration. And as a country that is growing, as a country that is in the top 5 of the economies, this is the time to actually push those boundaries, sir. And second reason being, we have to dream big for the next generation, and we have to prove to the next generation that anything can be possible in India, sir. But I, being the member of Standing Committee on Education, I was able to go through the funding that was available to most of the colleges that people like Somnath has gone through, sir. Like TKM College, which was there in Prem Chandra's constituency, sir. There's a funding called RUSA, which was given to the state university, sir. Allocation was around 8,120 crores, sir. It was almost the same for the last 4 or 5 years. If you look at the spending, it's not even 60% of the spending is happening, sir. This spending is expected to take these state universities, state-run universities, from where the scientists who are working in ISRO are coming from, sir. But somehow this funding is not able to reach them. The reasons, whenever we ask them, the state is not contributing 30% or 40%. That is the reason that they always come up with, sir. But who is the person that are actually losing, sir? It's the scientific community of this country. So I hope the minister was here, but I hope the point is taken so that this scheme can be altered, so that the maximum amount of funds can be utilized by all the state universities and state governments, sir. And coming to the women participation, Shashi Tharuji has mentioned about it, and there were some comments from the other side also, sir. There's 20 to 25% of the women participation in ISRO, which has a workforce of almost 16,000, sir. And if you look at the STEM graduates from India, women STEM graduates who are pursuing science, technology and engineering in India, 43% of them are women, sir. When you compare to US, it is only 34%. When you compare to the developed countries like Canada, it's only 31%. Even in UK, it is only 38%, sir. We are far, far, far ahead, sir.
And also 30% of the research papers across 186 fields, this information I got it from Scopus, sir, are being published by women, sir. But only 14%, even though there's 43% of them are STEM graduates, of them are women, only 14% of the women are participating in STEM-related jobs, sir. Yesterday we were very proud that we have passed the women reservation bill, sir, but these people are putting the effort for almost 15 to 16 years to graduate, coming out with these degrees, but not able to participate in this workforce, sir. Unless we come up with new schemes to encourage them, unless we place the money where we talk, this situation is not going to increase, sir. And third, Minister Jitendra Singh ji is also here, sir. It is regarding National Research Foundation, sir. I wish somehow every Friday the House gets adjourned, sir, and he always gets the time. We always get the time to ask him the question only on the Friday, but somehow it gets adjourned and we never get to ask the question. But National Research Foundation has been envisaged almost 4 years back with the outlay of 50,000 crores that has been mentioned. And until now, not a single rupee has not been, correct me if I'm wrong, but not been actually given out to any of these IITs or NITs or any of the state-funded universities, sir. For the last 4 years, that all these institutes have been actually waiting for it, sir. Mike, please. We can't hear. Yeah. Mike, sir, Mike. Because it's still being structured. So when my turn comes to speak, I'll elaborate on that. Yes, sir. I'll also elaborate on, because out of these 50,000 crores, we thought it's all coming from the state government, sir, but we have been told that 36,000 crores are supposed to be mopped up from the private. Yes. If you can give us the modalities of how you're going to raise it. I don't want to interrupt you, no. So I'll elaborate when my turn comes. Yes, because you're right. Almost 36,000 will be from non-government sources. That's the difference now. Because yes. Dada, please. Dada, Baidi, please. Because we are actually at one of the lowest globally, sir, with respect to the spending on the research. Only 0.7% of the GDP is spent on the research, sir. So that's why I expect the minister to answer it when elaborate it when you're speaking of it, sir. And the other point being, I've been speaking to a lot of the startups who are in the space exploration, sir, and most of them have come up with a request. You are doing PLI, Production Linked Incentive Scheme, for all the industries, coming from food sector to steel and every other industry, but somehow this PLI scheme is not being implemented for this space technology, sir. So if the minister can actually take it up. And also the second suggestion that they came up with is regarding GST exemptions for private satellite launch service providers, sir. There's a company called Skyroot, which is based out of Hyderabad. They're trying to, most of the cost that happens is during the launch, sir. And this company, Skyroot, is trying to reduce the cost, like how SpaceX is doing. But indigenously, they're trying to reduce it. So if some sort of encouragement can be given with regards to this, that will be a big favor to them, sir. Because, let me put this on record, sir, because there's no disrespect to our scientific community or anything like that, sir, but if you look at GSLV Mark IV, correct me if I'm wrong, it can only put 4 tons into the geostationary orbit, sir, whereas Long March 5, which is the Chinese one, can put almost 14 tons satellite in the same orbit, sir. And also in the lower orbit, GSLV Mark IV can only place 7 tons of the satellites, whereas Long March 5, which is of the Chinese one, can put almost 25 tons in the lower orbit, sir. Because there's a huge difference in our payload capacity and their payload capacity, sir. This can be closed down only if the participation of the private players in this whole thing, sir. So I wish the government, yes, our scientific community is doing exceedingly well with a frugal funding that is available for them, sir. But they will do much, much better if the funding can be increased, sir, and also if the private participation is increased, sir. I'll end up by saying what our Prime Minister has, I keep on quoting, Abhi samay hai aur sahi samay hai. I think this is the right time for all of us to do, because India being a country with young population, with a lot of aspirations, so this is the right time for the treasury benches to actually put the money where they're talking, sir. Thank you very much. Thank you.
Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान 3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 अक्टूबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहां नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने
और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना, बजट की कमी। लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहां से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब्स लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली के परिदृश्य को सुशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 1 मिनट। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, ओ बोले तो ऑपरेट करना और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिक को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरियां सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी और आज वो चंद्रमान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से मौजूद थी और आज हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दिनेश कामित जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों के प्रयास से हमारा देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। सभी भारतवासियों के लिए एक बड़े हर्ष गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना यान भेजा है।
अब हम सभी देशवासियों को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना यान भेजा था। उसके बाद 10 से 15 साल की मेहनत के बाद दोबारा यह समय आया है कि हमारा यान फिर से चांद पर अपना कदम रखा है। महोदय, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके अलावे भारत एवं भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। अब हम सभी देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महोदय, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेट कोर टेस्ट, इंटीग्रेट हॉट टेस्ट और लैंडर लैंग मैगजीन प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था और 2008 में ही हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल तथा कोसी में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह बहुत ही बड़े स्तर पर जान एवं माल की क्षति हुई थी। साथ ही कई रेल मार्ग ध्वस्त हो गए थे, जिन पर आज कुछ खंड भी परिचालन का शुभारंभ नहीं हो पाया है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज तक CRS का इंस्पेक्शन 11 जनवरी को हो चुका है, किंतु अभी तक उस खंड पर रेल परिचालन का शुभारंभ नहीं हो रहा है। बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, जबकि कई बार माननीय रेल मंत्री से संपर्क करके उनका ध्यान आकर्षित किया। उस पर अतिशीघ्र रेल परिचालन का शुभारंभ किया जाए। जोगबनी दानापुर तथा जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, जिसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जोगबनी से चलने वाली ट्रेन जिनका नया समय सारणी निर्गत हो चुका है उसे भी हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुभारंभ किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी 12,527 और 12,528 सरायगढ़ या सुपौल तक विस्तार किया जाए, जिससे सुपौल जिला सहित कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जनता को इसका लाभ मिले। महोदय, इसी के साथ पुनः मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकों को उनके कार्य क्षेत्र में सूर्य की तरह तेज प्रकाश बना रहे और इसी तरह देश को सर्वोच्च सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you. Dhanyavad. Honorable Member Shri Achyutanand Samanth ji. I would like to thank Honorable Chair to grant me this wonderful opportunity to participate in the discussions regarding success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. It's my first address in this new house that has brought with the historic passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, and today we are to discuss the other momentous milestone of soft landing of Chandrayaan-3 near the south pole of the moon, making Bharat the fourth country to achieve a soft landing on the moon after the US, Soviet Union and also China. 23rd August, all of us were glued to the screen and were keeping updates of what was happening second by second. Whole of India watched it through group live streams with finger crossed, becoming a part of this majestic lunar mission by heart. And when it landed, there was celebration and joy all over. It was the victory of each of 140 crore Indians. Really, it was the day when we saw the best of the poetic and literary references of Chand in relation with the space achievement. Chand pe ghar, Chanda mama ke paas, Chand dilaunga, etc., and so on. In this regard, Russia's president acknowledged the impressive progress made by India in science and technology. South Africa president celebrated the moment as a significant achievement for the BRICS coalition, while Nepal's prime minister termed it historic. The European Space Agency was thoroughly impressed, and the United States praised the success for its inspirational and historic significance. In this regard, we acknowledge this and celebrate the significant contribution of Indian scientists who made this possible. It is their efforts and perseverance that paid off. They are shining examples of knowledge, dedication, and expertise. The exceptional analytical abilities of our scientists, their steadfast commitment to exploration, and relentless drive to overcome challenges consistently places India at the forefront of global scientific achievements. Their quest for excellence and curiosity not only solidify our global reputation, but also inspire others to dream big and contribute to the world's knowledge. The involvement of large number of women scientists have contributed to the success of Chandrayaan-3 and India's space program in general motivates aspiring women scientists like no one else. In this regard, I am happy that several scientists from our state, Odisha, played very significant roles in ISRO Chandrayaan-3 lunar exploration mission. Devashish Mahapatra, Sarath Kumar Das, Atal Krishna Khotua, and Naga Raju, and so many Odias have contributed in this mission. I have to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his visionary and exemplary leadership to inspire India's space program for human welfare and scientific progress. He has always encouraged science and innovation. Under his leadership, a series of reforms have been ushered which have made research and innovation easier. The celebration of 23rd August as the National Space Day is an example of his love, respect and belief in Indian space program Chandrayaan-3 Triumph serves as a remarkable affirmation of Prime Minister Narendra Modi's resounding message, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I have to express my thanks for his leadership of including common man, everyone in the process, whether it is sports or space launch or G20. Thanks for Jan Bhagidari. Similarly, it has huge impact. It has opened up web of opportunity for several sectors that could boost India's economic growth.
It has opened up a new horizon of opportunity for several startups and companies involved in sectors such as space technology, aerospace, defense, and R&D. It will also boost private investment in allied sectors. Coupled with higher budgetary allocation, it will ultimately contribute to economic growth. It also paves the way for an increased scientific temper amongst the youth of India, an accelerated pathway for self-reliance in emerging sectors and technology, and instilling the confidence to be amongst the top 3 economy of the world, solidifying the Made in India image. Lastly, the future of the Indian space sector is vibrant, with several major initiatives and projects in progress, continuing government funding and private sector collaboration. India is poised to make an indelible imprint in the field of space exploration and technology. India is and will continue to be in the forefront of the space technology race. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चंद्रयान की सफलता पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे गर्व है कि इस नए सदन में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का पहली बार मौका मिला है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण में अपना पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। अब हम वैश्विक मानचित्र पर अपना स्थान रॉकेट प्रक्षेपण के संदर्भ में अंकित हो चुके हैं। इस सफल प्रक्षेपण हेतु मैं इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों सहित उक्त चंद्रयान के लिए काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को भी, जो दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 को सफल बनाया है और आज विश्व में भारत पहले स्थान पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के मामले में पहुंच चुका है। मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी और देश के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि समय समय पर देश की जनता की मांग को देखते हुए नित्य प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक अपनी लगन, परिश्रम और मेहनत से सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपण करते रहेंगे। इसी के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से भी समस्त वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कोटा प्रभाकर रेड्डी जी। नया सदन में पहली बार बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर जी। I extend my heartfelt congratulations to all of us on the notable achievement of the Chandrayaan-3. Today, as a stand here, I want to reflect on the ISRO's history, which started from teeny outwise in the great scientist Sarabhaji ji and becoming the powerful counterpart of the international space agencies of the world. As we know, Pandit Jawaharlal Nehru and scientist Sarabhai are considered among the founding further Indian space program ISRO, which today I know for its unique and cost-effective technologies. In this regards, we express our heartfelt gratitude to all the Honorable Prime Minister, starting with the Nehru ji to our current Prime Minister in the Narendra Modi ji for the further invaluable contribution of the transforming ISRO's trajectory into the historic
and I pay my respects to all of the scientists from the Aryabhatta to Somanath ji for the having contributed so much to the nation of the mission to the space. ISRO, through its hard work and the achievements, becomes a great role model, not just for the other countries, but also amongst the private companies invested in the space exploration, which ISRO was set up in the 1960s. Moon and Mars missions were not too in the agenda. Even in the for future, the aim was the initiate the space exploration, the expeditions to learn more about the world's space for the benefit of our people. With such clear objective, even in time when in the country was still struggling with issues of poverty and the limited resources, ISRO leaders developed in the style and the products exam maximum benefits within the minimum of efforts. We are very grateful to contributions of our brilliant scientists and leaders of ISRO. Since its inspection, the journey of ISRO from the 1960s to the today has simply been remarkable. Sir, Chandrayana's successful landing in our south pole of the moon was a joyous and a historic moment of the country. The country joined in the elite club of the countries to soft land and on the moon. The successful landing on the south pole of the moon, which no country has ever achieved so far, also shown the technologies programs that India has made so far and the scientific capabilities and the commitment to work to our Indian scientists and the engineers. The success Chandrayana-3 is not only an achievement for the country to fulfill global aspirations, but also open the avenue for the economic growth across various sectors. In the believed the bolster of Make in India initiative to contribute to the growth. Sir, of domestic companies which are engaged in the developing satellite systems and the telecommunications. The success of the great missions has also paved the way of the fostering heightened scientific mindset among the Indian youth, accelerating the journey towards the self-reliance of the emerging sectors and the technologies and instilling confidence position ourselves among top of 3 economics globally. While taking about the many achievements of the ISRO, it is the quality important also take about the extensive role played by the Telangana for our same the Telangana state emerging as the commercial hub of the space related products and the services in the well known that over 30% of the components used in the ISRO highly acclamated Mars orbits missions in the supplied by SME based in Hyderabad. Sir, 1 minute, sir. I can proudly to say that I am the first state that effectively take about the mate waivers and most receptive state of encourage youth and relay space of the behind this was is the dream that turned out of the true overturn. There was no vision of the mission of the Chief Minister of Chandrasekhar Rao and our IT Minister of the KT Ramarao, which is the launch of the space technology framework in the April 23. Telangana government under the leadership of K. Chandrasekhar Rao unvalued, and this is the aim of the blustering private industry involvement in the space technology sector. This framework has been the magic position establishment the state of the globally recognized the one-stop designations in the technology. And we are the emerging closer to that dream. My launching is the space tech framework and the implementing of the plan initiated to the Telangana state is the intents of the further achievements realized region the promoting the domestic products and the launch of the vehicle satellite systems and their companies ground the equipment manufacturing and the various other facilities within the state of Telangana. The state's government of Indian can be matched, guided by the vision of the Chandrasekhar Rao Chief Minister, dedicated efforts the Ramarao young individuals of the T-Hub established by the Telangana government are the achieving the remarks factors on the across the various domestic
expansional talents in the Telangana, pushing the boundaries, achieving the significant milestones in the nations of the setup and the provide the city-led launch of the history. Hyderabad startup companies spended the door of the new opportunities in the Indian space sectors. 1 minute, sir. One notable achievements in the economy, Skyroof Aerospace Private Limited, which has successfully pioneered Indian the maiden private rocket launches in the Vikram S, setting the remarkable presented. This is the epitome of the Telangana government. Involving the support of the young individuals who are the showing of the talented world and the transforming their brilliant ideas in the reality through their startups. Further coming up the latest national achievements of the Chandrayaan-3, there is a doubt about the mission. If the displayed the fact of the Indian will be soon emerge prominent player as the cost of the effective satellite launcher. It is expected that is a will urgent argument of the Indian contribution of the global space of the economy by 8.10%. Honourable member, please sum up. Moreover, expected the believement the Chandrayaan-3 is the ending time the influences Indian domestic market as is the expected of the foreign investors prepare respectively of the Indian grow in the space of the research. Yes. Thank you, sir. Okay. Honourable member Srimati Supriya Sule. Thank you, sir. Is there a cabinet minister present in the house? Please raise your hand. Cabinet minister, cabinet. Honourable Cabinet, not for MOS, cabinet minister. Sir, such an important debate going on, there is not one cabinet minister, sir. We can expect ministers. Sir, please, you must put it, sir. It's such, how serious they are about Chandrayaan-3, sir. Yes. It's such a, we are so proud of what has happened. Sir, you must give a ruling. There has to be one cabinet minister here, sir. Message will convey it to ministers. Sir, please put it on record. Start. There is not one cabinet minister for such an important debate, sir. Your point is noted. It will convey it to ministers. Please do, sir. Please give us. You can start now. Aap ruling dijiye, sir. They don't have any right Not to a single like cabinet this, minister. That's really Yes. shameful, sir. Sir, I'd like to take this opportunity to congratulate the success of Chandrayaan-2. Every scientist and technocrat that has contributed in this 60-year journey. So I would like to congratulate everybody who has contributed in their way. Success of Chandrayaan is about competencies, capabilities, and capacities of people who have contributed in 60 years. Sir, I was very fortunate enough to grow in a city of Mumbai, which had Nehru Science Center and Nehru Planetarium. And I was brought up completely with a scientific temper. I see this whole debate actually with absolute respect to Rajnath Singh ji, who we always look up to. So today in his speech, I had a slight disappointment in his speech because I was expecting him to give us the vision of tomorrow, Chandrayaan 4, 5, 6, Aditya, L1 further. But that really lacked, so I was a little disillusioned today. And I am very strong about tradition, about values, about culture and heritage. These are all the things we are all brought up with. But today as a proud Indian, I felt from the treasury benches that completely lacked in the speeches that came from me. I will not repeat the points about Dr. Tharoor and Dr. Roy said, but I would definitely put it on record that it was like Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Sarabhai, who we grew up learning and reading about. It was Dr. E.V. Chitnis also, who substantially contributed in the growth story of ISRO. And it was, of course, Professor Dhawan, Dr. Brahman Prakash, who was one of the best metallurgists India has ever had. U.R. Rao, Dr. Nair, Dr. Kasturanga, Dr. Krishna, Dr. Shivam, and now Dr. Somnathan, who have contributed to the growth of ISRO where we are today. Sir, the Honorable Prime Minister always talks about indigenous growth of India. I would like to put it on record that I was very fortunate enough to get elected from a constituency called Baramati in Pune district in Maharashtra, sir. I'm very proudly happy to share with you, sir, there is an industry over 100 years started by Walchand Hirachand. It's called the Walchand Nagar Industries, which 100 years ago started innovation under that leadership, and the entire Doshi family and the Walchand family today have contributed to the growth of that area, which is Indapur, which is in my constituency, Walchand Nagar, sir. And they have made
immense parts to this entire Chandrayaan जो बना है सर, उसमें वालचंद नगर की और इंदापुर की बहुत बड़ी देन है और ये सब वालचंद हीराचंद ग्रुप ने बनाया है। तो 100 साल से ये फैक्ट्री इसमें काम कर रही है और मैं आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने 100 साल में जो काम किया, इंडिजिनियस जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये वालचंद ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान। इसरो के जो पार्ट्स बनते हैं वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है कि मेरा भाग्य कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन के आती हूँ सर। वैसे इनोवेशन की जब बात होती है तो और दो है कि खेड़ शिवापुर जो एरिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, वहाँ VCB इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी है, VCB इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां भानुदास भोसले, सुजाता भोसले, संदीप चौहान और सोन सुंदर ये वेलू एरिया में है, जिन्होंने चिप्स बनाई है सर जो इस चंद्रयान में गई है। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक वालचंद ग्रुप का और दूसरा VCB इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड व्हेन आई स्टैंड हियर वेयर वी आर प्रेजिंग अबाउट चंद्रयान एंड दीज आर ऑल इंडिजिनियस। और ये सारी कंपनियां सर 2001 तो 100 साल पुरानी है और दूसरी 15-20 साल पुरानी है। सो आई जस्ट वुड लाइक टू पुट ऑन दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट. And there are other companies which are doing wonderful work in my constituency, like the hydrogen technology, sir, software, be it Wipro, be it KPIT, Tata's, Mahindras, they've all contributed to all these works that are going on, sir, in the new development of the new India. Sir, the whole thing which Dr. Tharoor also mentioned and Professor Roy also said was the spirit of inquiry and the spirit of questioning, sir. The entire debate today, somewhere I felt that we are very proud of our glorious tradition, sir. Be it in mathematics, be it in metallurgy, and be it in astronomy. India is very proud. 2000 years ago, mathematics, something that everything goes with. Unless तुम्हारा गणित अच्छा हो, life में कुछ नहीं हो सकता. So we have such rich tradition. So instead of getting trapped into stories, which people were talking about earlier in the debate, I'm not condescending. It's wonderful. Whatever your mother has taught you can never be wrong. But we must not forget the rich tradition of mathematics, metallurgy and astronomy which India is so proud of. Because श्रद्धा तो होनी ही चाहिए सर, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए. So श्रद्धा जो आपको सिखाया वो जो आप चाहते हैं उस पर आप विश्वास रखिए, वो आप, it is in a democracy, it's your right. But the problem is I get worried when people in position of power and who are sitting on that side of parliament today talk about issues which actually surprise me when we are talking about the scientific temper. मेरे महाराष्ट्र में सर पिछले हफ्ते एक डॉक्टर आया था जो ब्लैंकेट्स डालता है लोगों पे, और ब्लैंकेट डालने के बाद वो बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. सर आप सोचिए, एक तरफ हम लोग चंद्रयान 3 की बात करें और दूसरे जगह एक भारतीय जनता पार्टी का MLA बोल रहा है कि ब्लैंकेट डालिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. ये कैसे चलेगा? तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए. आपको याद होगा सर, बी इट Shri Dabholkar, Shri Gauri Lankesh, Govind Pansare and Kalburgi ji. What were they? How did they die, sir? Because this was whole conflict which we are, and I think this was a debate where we only should discuss about scientific temper. तो श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा दाभोलकर जी ने बहुत मूवमेंट चलाया था. हमारे यहाँ बिल भी है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ सबने एक्शन लेना चाहिए. और जहां पार्लियामेंट में अंधश्रद्धा के बारे में कहा जाता है, सो समबडी लाइक मी हु बिलीव्स इन क्वेश्चनिंग एंड वांट्स द नेक्स्ट जनरेशन, तो इन चंद्रयान बैठ के हमारे बच्चों को हम अंधश्रद्धा सिखाएंगे तो देश आगे कैसे जाएगा सर? सो वी हैव टू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर एंड आई वुड लाइक टू कोट डॉक्टर APJ Abdul Kalam ji when he said, dreams are not those which come while you are sleeping. Sir, dreams are not those which you come into reality while you're sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. So I pay a rich tribute to every scientist and technocrat in this country who have contributed in the last 6 decades to make Chandrayaan 3 a reality. Thank you very much. Thank you very much. Shri Prince Raj ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. आज आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पे बोलने का मौका दिया. मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं. सर, आज इस नए सदन में प्रथम भाषण देते हुए काफी खुशी और काफी गर्व महसूस हो रहा है. आज का विषय कोई पॉलिटिकल विषय तो नहीं है सर, और ना इस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन कल जैसे राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा था और आज लोकसभा में हो रहा है,
कई माननीय सदस्यों को हमने सुना। जैसे कल लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और आज चंद्रयान 3 पे हो रहा है, तो कुछ माननीय सदस्य के भाषण से लगा कि ये क्रेडिट टेकिंग मूवमेंट बन गया है कि जब बिल लाया गया तो उसमें कहा गया ये बिल हम पहले लेके आए। जब चंद्रयान 3 पे बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना हमने की। तो हमें लगता है इस तरीके की पॉलिटिक्स आज नहीं होनी चाहिए और आज मुक्तः हमें अपने विषय पर रहना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, हम अपने वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का, रिसर्चर्स का और उन सभी कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और आदित्य-1 L1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसके लिए भी हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, यह स्पेस मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हमने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने उन महिलाएं साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दें जिन्होंने अपना योगदान इस सफल स्पेस मिशन में दिया है। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने योगदान के बदौलत एक पिक्चर बदला है, एक इमेज बदली है। चाहे कल हम लोग यहां पे जैसे डिस्कशन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल के ऊपर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी सेक्टर्स में हमारी माताएं बहनों ने अपना अपना स्थान बना लिया, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, इंजीनियर्स हो, डिजाइनर्स हो या एडवोकेट्स हो, जज हो, पायलट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में, विधानसभा में उनकी कमी हमेशा रही और कल के बिल के पास होने से हमें लगता है ये भी कमी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से हमने महिला साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने सोच बदली है। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान की महिलाएं, उनका काम सिर्फ चूल्हा तक है, खाना बनाने तक है, लेकिन वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक और सच्चाई है जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं सर, जो घर की महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं है सर। वो महिला उस घर की होम मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की हेल्थ मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की एक सपोर्टिव सिस्टम होती है, एक फूड मिनिस्टर होती है सर। उस घर के निर्माण में उस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। सर, ये बात दुनिया समझ नहीं पाती है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक तरफ हमारी माताएं आ रहे और यहाँ मंत्री जी भी है उपस्थित। सर, ये दुनिया समझ नहीं पाती है कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरीके से एक तरफ हमारी माताएं बहनें चंदा चांद को अपने करवा चौथ वाले दिन पूजती है और दूसरे तरफ हमारी माताएं बहनें उसी चांद पर दोनों मंत्री है और आ रहे हैं लैंडिंग करती है। कृपया शांत रहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी शिक्षा है, इसको दर्शाती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा, चंदा मामा अब दूर नहीं है। सर, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम लोगों का जो बजट है, जो स्पेस मिशन का बजट है, वो बहुत कम है और बहुत कम बजट में भी हम लोगों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की। अगर हम देखें, अन्य देशों ने भी प्रयास किया, लेकिन भारत ही एक प्रथम ऐसा देश है जो कि दक्षिण ध्रुव में पहला सफलपूर्वक लैंडिंग उन्होंने किया। तो इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक भारत का पहचान उन्होंने बनाया है।
सर, हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद और करेंगे कि जिस तरीके से बुरे परिस्थिति में उन्होंने अपने साइंटिस्ट का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी, उनका नेतृत्व किया, उसी का परिणाम है सर कि आज हम लोगों ने एक सफल मिशन, स्पेस मिशन हम लोगों ने पूरा किया। हमें पूर्ण विश्वास है सर कि उनके कौशल नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि देश ने एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया, जिस तरीके से आज देश डिफेंस सेक्टर में सर इक्विपमेंट्स बना रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वहां गए थे, देखे भी थे। और जिस तरीके से ये नया संसद भवन भव्य भवन बनकर तैयार है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो या आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो, सर इससे यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और सर वो दिन दूर नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच 2047 में एक विकसित भारत अपने पूरे देश की सूची में अपना नाम दर्ज कराएगा। वो दिन दूर नहीं है सर। सर ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर आप एक बार पुनः हम अपने सभी साइंटिस्ट, सभी अपने महिला साइंटिस्टों का, सभी इंजीनियर्स का, सभी रिसर्चर्स का, सभी उन कर्मचारियों का और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, मिशन से जुड़े हुए थे, हम उन्हें पुनः हमें नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी का और विशेष रूप से हजारीबाग की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है कि जो हमारा पुराना सदन था, ऐतिहासिक और सुंदर सदन, वहां बोलने के अवसर मिले और आज इस भव्य और आधुनिक भवन में भी बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। उससे आप लोगों के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय है, अमृत काल का समय है, अमृत काल का समय है और बड़ी तेजी से देश बदल रहा है, देश में परिवर्तन आ रहे हैं और हम सबको महोदय, सब मान्य सदस्यों को, यहां देश की जनता को लग रहा है कि हम लोग रोज रोज इतिहास को रच रहे हैं, रोज इतिहास को रच रहे हैं। कल ही हम लोगों ने महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन किया, जो स्वर्णीय अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। उसी के पहले 19 सितंबर को हम लोग पुराने सदन से इस भव्य सदन में हम लोग आए, इतिहास हम लोगों ने रचा। 9 सितंबर को, 10 सितंबर को जब G20 की लीडर्स समिट हुई, तब भी हम लोगों ने नई दिल्ली में इतिहास हम लोगों ने रचा। और क्योंकि आज चंद्रयान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चंद्रयान भी जब 23 अगस्त पे जब चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की साथियों, तब भी हम लोगों ने दुनिया का इतिहास रचा, भारत का इतिहास रचा। और इस कारण, क्योंकि इतना हम लोग यहां अपना योगदान दे रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है, आज भारत विश्व में विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में उभरता चला जा रहा है। भारत उभरता चला जा रहा है और इसलिए उभर रहा है क्योंकि अगर हम में समृद्धि है तो हम में सादगी भी है, अगर हमारी शक्ति है तो हमारे में एक शांति है, और अगर हमारा साइंस है तो हमारे संस्कार भी हैं, अगर हमारा साइंस भी है तो हमारा संस्कार भी है। और अगर कोई समझता है कि हम अगर संस्कार की बात करें तो हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा कि हम लोग संस्कार की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं और साइंटिफिक टेम्पर की बात थोड़ा कम करते हैं, ये उनका मानना था। लेकिन हम लोगों के इतिहास में प्राचीन समय से एक संतुलन रहा है, संस्कार में भी और साइंस में भी। और अगर हम अथर्ववेद में जाएं, मंडपा उपनिषद में जाएं, तो वहां से जो मूल मंत्र निकल के आया वो आज हमारे राज्य का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते। अगर हम किसी चीज से भी प्रेरित हैं
तो हम सत्यमेव जयते से प्रेरित हैं, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और अगर विज्ञान कुछ भी है तो वो सत्य है, वो ट्रूथ है। और जो भी कोई, और मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट हूं, इंजीनियर हूं, तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि अगर हम लोग साइंस में कोई भी तलाश करते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं, उनको मालूम है कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। और वो हम लोगों के संस्कार में लिखा हुआ है। और इसलिए आज अगर हमारी साइंस जो है वो चंद्रमा में पहुंची है, क्योंकि हमारे संस्कार हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं, सत्यमेव जयते। और हमें, जैसे अभी बहुत वक्ताओं ने कहा है और मैं भी अपनी बात उसमें जोड़ना चाहूंगा, कि अगर हम इस साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। और अगर ये योगदान है तो उसे हम 1962 या 1960 से हम लोग नहीं उसे आरंभ करें। हम अपने संस्कार के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी सोचें, जहां विश्व को, प्राचीन समय विश्व को आर्यभट्ट जैसे, भास्कर जैसे, ब्रह्मगुप्त जैसे, वरमहीर जैसे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व को गिनती सिखाई, विश्व को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, विश्व को एस्ट्रोनॉमी सिखाई। और प्रोफेसर साहब और सब जो मेरे यहाँ साइंटिफिक जो हमारे सब यहाँ साथी हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे साइंटिफिक संस्कार हैं। और उससे जुड़े हुए उसके बाद पीढ़ी दी पीढ़ी, कड़ी दे कड़ी जो चलती आई, उसमें ये सही है कि पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। 1960 में, फिर 1962 में उन लोगों ने इसरो को आरंभ किया। उसके बाद सब माननीय प्रधानमंत्रियों जी का सहयोग है, इंदिरा गांधी जी का सहयोग है। उन्होंने सतीश धवन जी को वापस बुलाया, कैलटेक में वो पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जाकर वो इसरो गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो मुझे प्रेरणा जिन्होंने दिया, जैसे सीवी रमन साहब, मेघनाथ साहा साहब, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एचजीएस मूर्ति, वमन पटवर्धन, हमारे परम आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, सतीश धवन जी, इसरो के सब जो चेयरमैन रहे हैं, सतीश धवन जी, राधाकृष्णन जी, शैलेश नायक जी, किरण कुमार जी, शिवन जी, और अब सोमनाथ जी, यूआर राव जी, कस्तूरी रंगन जी, माधवी नायर जी, इन सबको हमें धन्यवाद देना है। और विशेष रूप से इन सबको तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन हम लोगों को सब जो हम लोगों की साइंटिफिक कम्युनिटी है, ना सिर्फ आईआईटी दिल्ली में या और सब आईआईटीज में जहां से मैं हूं, लेकिन जो हमारे सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हजारीबाग में विनोबा भावे में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से हमारे इंजीनियर आए जिन्होंने इसरो में और साइंस में उन्होंने योगदान दिया है। अभी हमको बता रहे थे विद्युत जी कि जमशेदपुर से भी बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में जुड़े रहे हैं, त्रिवेंद्रम से लोग जुड़े हुए हैं, चेन्नई से लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हमारे महान इस भारत से हमारे इतने सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जिनके योगदान, जिनके सहयोग समर्थन के कारण ये हमारा जो पूरा अब आते हैं। लेकिन इन सबको धन्यवाद, हम सबका नमन करते हैं, हम सबका प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का योगदान इसमें स्मरणीय रहा है, अकल्पनीय रहा है, अतुल्य रहा है, तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन नेतृत्व और जो अतुल्य योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, वो इतिहास कभी नहीं भूल जाए। हमारे विपक्ष के साथी भले भूल जाएं या चाहे उसको भूलने के लिए, लेकिन इतिहास उनको नहीं भूल सकता। और अगर सत्य में जयते, अगर आप साइंटिस्ट है, अगर आपको फैक्ट से अगर आपको कोई ताल्लुक है, तो इसको आप ना भूले। और मैं इसको सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक तौर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तर्क और तत्वों के आधार पर कह रहा हूं कि अगर योगदान विशेष और अकल्पनीय रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। आप जान लीजिए कि 2013-14 में जो इसरो का बजट था वो 5,600 करोड़ का बजट था। आज के समय इसरो का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया है, 12-13 हजार करोड़ हो गया है। ये हम लोगों ने 9 वर्षों में किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। और यहां सब जानते हैं, सब अनुभवी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको मालूम है कि ऐसे बहुत कम विभाग हैं भारत सरकार में, सभापति महोदय जी, ऐसे बहुत कम विभाग हैं जो सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यही उनका है। और अगर इसमें बजट को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा
आप ये भी जान लीजिए, और सुप्रिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं उसमें, कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वालचंद का हो, चाहे वो हम LNT की बात करें, और विशेष क्योंकि मेरे सब झारखंड के यहाँ साथी बैठे हैं, मैं HEC रांची का भी इसमें सहयोग जो उन्होंने दिया है, जो क्रायोजेनिक इंजन बना है वो HEC रांची में ही बनाया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहा है। लेकिन 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि जो पूरा जो स्पेस का जो सेक्टर है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोल दें, इसको लिबरलाइज कर दें, और इसके कारण क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सहयोग दिया है कि आज स्पेस में 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, और हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, जैसे उन्होंने बजट को दोगुना किया, वैसे उन्होंने स्पेस को लिबरलाइज करके 140 स्टार्टअप्स को उन्होंने योगदान दिया। और तीसरा कि जब हम लोगों ने इस तरीके से लिबरलाइज किया, तो विश्व में नंबर 1 और सबसे अफोर्डेबल किफायती तरीके से अगर कोई भी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकता है तो वो इसरो ही डाल सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने कुल मिलाकर, मैं आपको ये आंकड़े बता दूं, स्पष्ट आंकड़े जो हैं कि हम लोगों ने करीब लगभग 400 फॉरेन सैटेलाइट्स को हम लोगों ने अर्थ ऑर्बिट में डाला है, जिससे हम लोगों को इसरो में 3300 करोड़ का हम लोगों को इसमें रेवेन्यू हम लोगों को मिला है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस तरीके से इसरो को हम लोग पूरी तरीके से ओपन अप करके सैटेलाइट लॉन्च में हम लोग ले आए, और इस तरीके से अगर किसी को भी पूरी तरीके से श्रेय इस सफलता को मिलना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, ये हम सब लोग स्वीकार करें। इसरो का इतिहास बहुत दिनों से चलता है। मैं चंद्रयान पे आता हूं, लेकिन अगर हमें चंद्रयान को समझना है तो हम उसको पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट को समझना होगा, जो सोवियट्स ने 1975 में जिन्होंने अर्थ ऑर्बिट में डाला। उसके बाद हम लोगों का खुद का लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट 1980 में गया, फिर रोहिणी सैटेलाइट्स गए, इनसैट सैटेलाइट्स गए, IRS सैटेलाइट्स गए, ये सब सैटेलाइट्स गए। एक लंबी हम लोगों ने एक कड़ी बनाई इसकी, हम लोगों ने नए लॉन्च व्हीकल्स हम लोगों ने तैयार किए, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV, और फिर छात्रों के लिए भी स्मॉल सैटेलाइट्स को भी हम लोगों ने लॉन्च करने की क्षमता की, और हम लोगों ने मंगलयान को भी हम लोग जाकर, मार्स को भी जाकर हम लोगों ने ऑर्बिट में हम लोगों ने अपना सैटेलाइट भेजा। और आपको याद होगा तब हम लोगों ने सब जगह कहा था कि इतनी किफायती तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि बॉलीवुड की पिक्चर के, हॉलीवुड के पिक्चर के बजट से कम तक हम लोग मंगलयान के द्वारा हम लोग मार्स तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी क्षमता है, और अगर ये क्षमता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम में लगे हुए हैं, अगर पूरा भारत इस काम में लगा हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि स्पेस जो है और चांद पहुंचना कितना प्रेरणा का स्रोत है, और इसको कितने दिनों से इसको एक लक्ष्य बनाया गया। और उसमें मैं अमेरिका की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर जो अमेरिकन जो स्पेस कैपेबिलिटीज है उससे हम लोग सब लोग प्रेरित हैं। और खासकर जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही जाना माना एक भाषण है जो मैं अभी कोट करना चाहूंगा, और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था वो हम लोगों को याद करना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था, Why some say the moon? Why choose this as our goal? This replies to India. Why choose the moon? Why is this our goal? And why, they may well ask, why climb the highest mountain? Why climb the highest mountain? Because it is there. New hopes for knowledge and peace are there. We choose to go to the moon this decade and do the other things, not because they are easy. We choose to go to the moon. This applies to India. We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard. अगर हम बड़े लक्ष्य अगर हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग अपनी आकांक्षाओं को बनाते हैं, अगर हम इस भवन का निर्माण 3-4 साल में कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये आसान काम है, इसलिए क्योंकि ये मुश्किल काम है. Not because it is easy, because it is hard that we choose to go to the moon. It is not easy
to build this parliament building in 3 or 4 years. It's not easy, but because it is hard, we have chosen to do it. It is hard to build all the roads and highways and everything else, but because it is hard, we want to do it, because that's the new India we want to build. It is hard. It is hard to be able to feed 80 crore people with the Garib Kalyan Yojana, but क्योंकि मुश्किल है, इसलिए हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करके दिखाया. It is not because it is easy, but because it is hard. And it is hard. अगर कोई समझता है कि चंद्रयान चांद में पहुंच गया और कोई भी इसे कर सकता है, तो मैं आपको लूना 25 के बारे में बताना चाहता हूं. लूना 25 के बारे में. और आप जानिए कि अगर 1950s में स्पेस रेस चालू हुआ और अगर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम लोगों को 1960s में ही हम लोगों को मून पे पहुंचना है, तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी, एक कंपटीशन था. और वो कंपटीशन किसके साथ था? वो सोवियत यूनियन के साथ था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने स्पेस फ्लाइट और स्पेस का पायनियरिंग जो उन्होंने किया था, यूरी गगारिन वगैरह आप सबको याद होगा. उस स्पेस रेस के कारण जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वी मस्ट गेट टू द मून. वही सोवियत यूनियन, वही स्पेस प्रोग्राम उसी समय जब चंद्रयान अगस्त में पहुंच रहा था साउथ पोल ऑफ द मून, उनका लूना 25 जो था वो भी अगस्त में फेल हो गया. नॉट बिकॉज इट इज इजी, it is because it is hard that we go to the moon. The Russians who developed, who pioneered space flight, they were the ones who were not able to succeed. They tried a South Pole landing and they failed. They failed. And they used a 30 kg robotic launcher, a 1750 kg launch mass, not because it is easy. What did we do? Instead of putting a 1750 kg launch mass, Professor Saab, we put a 4000 kg launch mass and a much larger payload on Chandrayaan 3. We put it into Earth orbit. We moved it out of Earth orbit into the lunar orbit. And then on August the 23rd at 6:04 p.m., and I'm sure everybody here must have been spellbound watching, and I will tell you also that the number of concurrent users on the ISRO channel on YouTube that day was the highest YouTube has ever recorded. पूरा भारत उस ऐतिहासिक क्षण को देख रहा था YouTube के चैनल पे. और 6 बजे अगस्त 23 को हम लोगों का चंद्रयान वहां चांद पे पहुंचा. साउथ पोल की लैंडिंग हुई. 14 दिन उन लोगों के सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चले. नॉट बिकॉज इट इज इजी, the Russians were not able to do it. It is because it is hard that we did it, and we accomplished something that the Russians were not able to accomplish. Because it is hard, not because it is easy. That is the India we are building. That is the India that we want to see. That is the India our Prime Minister wants to see. और इसी कारण जो हमें चंद्रयान में सफलता मिली, सब हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सफलता थी. और मुझे तो खुद निजी तौर पे बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे गर्व हुआ. हजारीबाग के भी कई लोग उससे जुड़े हुए थे. मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई. और जब आप उनसे बात करें, हर से वो गदगद थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया है. लेकिन ये तो एक और ही कड़ी है. अभी हमें और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है. चांद पे तो हम पहुंच ही गए. फिर आदित्य L1 तो हम लोगों को सूरज तक ले गया. और सूरज पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कोरोना पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कोरोना का स्टडी हो रहा है, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है. लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों की सोच ये है कि हम लोग जल्द ही हम लोग गगनयान के द्वारा, और मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हो गई है. हमारे पास वो पेलोड कैपेसिटी है हमारे रॉकेट्स की, लॉन्चर्स की, कि हम लोग कुछ लोगों को हम लोग 400 किलोमीटर सैटेलाइट के पार हम लोग स्पेस में ले जाना चाहते हैं. गगनयान के द्वारा मैन स्पेस फ्लाइट भी यहां भी हम लोग जाना चाहते हैं. तो ये लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है. यहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं. और इसके द्वारा जो हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बन रहा है, उसे भी हमें समझना चाहिए. ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि हमें सिर्फ ये मिशंस जो है इसमें हमें सफल नहीं होना है. हमें मिशन से और आगे बढ़कर पूरा स्पेस का एक इंडस्ट्री, पूरा स्पेस का एक इकोसिस्टम भी हम लोगों को बना देना है. और क्यों हमें इस तरीके से बनाना है? क्योंकि जब स्पेस का इकोसिस्टम बनता है तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम लोग उसके द्वारा उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं. और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे इन एडवांस टेक्नोलॉजीज पे हम लोग अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है. और इसमें मैं हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का मैं एक कोट आपको बताना चाहता हूं.
ISRO's vision was clear. ISRO's vision was clear. If Indians were to play a meaningful role in the community of nations, they must be second to none in the application of advanced technologies to real-life problems. That is our Honorable Prime Minister's vision. We use the space ecosystem to develop the knowledge and the ability and the capabilities to deal with these advanced technologies, whether they pertain to material science, whether they pertain to telecommunications, whether they pertain to remote sensing, weather forecasting, all of these different advanced technologies in computing, in semiconductors, all of them will come within our capability set if we are able to push the space ecosystem. And I will conclude, Sabharwati Mahoday ji, with the vision that we take our 140 startups, they become thousands of startups, we generate tens of unicorns, and they become among the world's leading space companies, pushing these advanced technologies, taking India not just to the moon, not just to the sun, but to the stars. That is the new India that we are building, not because it is easy, because it is hard, and we want, as Thank you very much. Said, progress. Thank you very much. Sri Karti Chidambaram ji. Sir, there are certain events in a nation's history which uplifts the entire national mood. And August 23rd, 2023 was definitely a golden moment in our history when billions in India abatedly watched Chandrayaan successfully land on the uncharted part of the moon. It was really an epoch-making day, and it was a day which lifted up the spirits of entire India. This spirit was lifted up by ISRO, which is manned by people like T.K. Anuradha, M. Vanita, Latikamba, Kalpana Kalasti, Mangala Mani, Sohan, Subhashish Nayak, and the former director Sivan, and the project director Veeramuthuvel from Viluppuram. These are people who come from small towns, who studied mostly in government schools and in in non-private colleges, not very glamorous institutions, who lifted up the spirit of India through ISRO. So this House, I'm sure, and the entire nation pays great tribute to them. Sir, it's not surprising that our defense minister, who was a physics lecturer, veered into philosophy, veered into spiritualism, veered into faith. Every physicist, including Oppenheimer, who was the father of the atom bomb, eventually became a philosopher. And I'm sure our defense minister has got a philosophical side to it. But sir, the point is, we confuse spiritualism and faith. I agree that science and spiritualism have a very close connection. I agree that philosophy and science has a broad connection. But sometimes we confuse faith to be spiritualism and science. Faith cannot be questioned, because if it is questioned, an Ayatollah will give a fatwa, a clergy will expunge you from the church, or a self-styled godman will tell you that you are a heretic. So faith is not questioned, but spiritualism is questioned and science is questioned. What is questioned is what can be science. What can't be questioned can only be faith. So let's not confuse faith and spiritualism. Sir, I am a believer in God. I have faith in astrology. I have faith in God. I have faith in ritualism. That is my faith. But that should not be confused with spiritualism or with science. What is science is it must be experimentally proved. It must be tested. Spiritualism is also tested. Nothing which is permanent can be science, because science is constantly questioned. But faith, we believe, is permanent and can't be questioned. So let us never confuse that. And in today's world, faith, myth, mythology, fable are being used by charlatans in the guise of science. And in today's political environment, this confusion is getting even worse. So it is very, very important that we maintain the scientific temper of India, which has been showcased by ISRO and by the various scientists I listed up. Sir, it is actually baffling. This question of us landing in the moon, people have said we have launched the cheapest moon mission in the world. This moon mission was cheaper than the two Hollywood movies which are produced about space. I completely agree with that. But it also poses some very serious questions to us. As a people, as a nation, I'm not pointing fingers at the government. How can we as a nation
which is able to land in the uncharted part of the moon, still have manual scavenging? How can we not build roads which don't go away in one monsoon? While we have this great scientific capacity, where have we lost this? I completely understand our heritage and our history has been very closely associated with science and with astronomy. In Tamil Nadu, you come to the Brigadishwara temple, you will talk about that building for thousands of years. But I am not sure whether we are going to be talking about this parliament 1,000 years from now. I am not sure whether this building will last 1,000 years from now. Where have we lost that? That is where we really need to focus. I am completely in agreement that we must research, we must test, we must go back to our roots to find out where did we lose this science which we already had. How can we as a people have this contrast, landing in the moon and having manual scavenging at the same time? How can we be there, launching satellites for everybody else, but can't manage a road in a monsoon? Why can't we do that? There is something seriously wrong in our society if we can't leverage on the scientific advancements we've been making. We really need to reach out. There are geniuses in every town, in every village. Then ISRO has been the classic example of little town India. ISRO is not about Ivy League schools. ISRO is not about IITs. ISRO is not about Oxford and Cambridge. ISRO's success is about the genius of India. If you want to call it Bharat as well. And we need to unleash that genius. And how do we do that? I have a proposal to the government. Please institute fellowships, scholarships, and internships for ISRO in government schools, particularly aimed at government schools. You are very, very good in running national campaigns, I must confess. Please run a national campaign. Identify the next Kalpana Chawla. Identify the next Vikram Sarabhai from the government schools of India. Run a nationwide program. Encourage people to believe that they can also be part of it. Because people, until this landing happened, many people don't even know that ISRO was there. Many people do not know that they can become scientists. And here we have living examples of people from small towns who went to government schools becoming great scientists. Run a national campaign. Run fellowships. Run scholarships. And run internships. Open the doors of ISRO to the average Indian who's so curious, who's fired by ambition, who's fired by aspiration to be part of it. Sir, this is a great day and a great time in our lives. It is important for us to merge our historic scientific knowledge with modern science. But let us never ever confuse ourselves. Let us never ever confuse ourselves with charlatans who confuse faith and who use that as a propaganda. I know many years ago, I am a firm believer in the Lord Ganesha, but they were telling us that Ganesha was drinking milk. But nobody ever explained it was actually capillary effect of a porous body which was actually sucking up a liquid. They tell us that first plastic surgery was on Ganesha without ever explaining how the circumference of an elephant trunk can be fitted on a human body. But sir, faith is different, spiritualism different. Spiritualism is questioned, faith is not questioned. But let us never ever confuse that. I am not disparaging any faith. I am a man of faith. I believe in God. I believe in rituals. I even believe in astrology. But that should never take away the scientific temperament of India. And we must be a scientific nation, build on the foundations, and answer these contrasting questions which are being posed to us. I once again salute the unsung heroes of ISRO and hope we unleash the true potential of India. Thank you very much. Thank you very much. Sri K. Subharyam ji. ஸ்பீக்கர் சார், மனிதர்களை மூட நம்பிக்கையிலிருந்து விடுவிப்பது விஞ்ஞானம். மனிதர்களுக்கு இடையில் நிலவக்கூடிய மூட பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் விஷமத்தனமான விஷம் நிறைந்த கருத்துக்கள் புதர்போல் மண்டி வளர வாய்ப்பளிக்கிறது. எனவே மனிதர்களை மூட நம்பிக்கைகளிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திய நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு இந்த விஞ்ஞானம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு துணை நிற்கிறது. முதலில் இதற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களைத்தான். எதிர்கால இந்தியா எந்த திசை வழியில் வளர வேண்டும் என்று ஊடுருவி கண்டு உணர்ந்து முன்கூட்டியே தடம் போட்டுவிட்டு சென்றவர் மறக்க முடியாத மகத்தான மனிதர் ஜவஹர்லால் நேரு.
நேரு அவர்கள்தான் விதை போட்டார். நேரு போட்ட விதைதான் இன்றைக்கு சந்திராயனாக சந்திராயன் 1, 2, 3 என்று வளர்ந்திருக்கிறது. புதிய புதிய விவரங்களை மனிதர்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு துணை புரிந்த நேரு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு 50 ஆண்டு கால தொடர் முயற்சியின் விளைவாகத்தான் இந்த சந்திராயன் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் வெற்றியின் மூலம் நிலவை பற்றி மூன் பற்றி கற்பிக்கப்பட்டிருந்த கற்பிதங்கள் பொய் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறது. இதுவரையிலும் சொல்லப்பட்டு வந்த நிலவு குறித்து சொல்லப்பட்டு வந்த விஷயங்கள் முற்றிலும் சந்திராயன் 3 தகர்த்தெறிந்திருக்கிறது. இந்த மூட கருத்துக்கு முற்றிலும் தவறு என்று உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காகவும் விஞ்ஞானிகள் முதல் சாமானிய வேலைகளை செய்து உதவிய அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். சயின்டிபிக் டெம்பர் என்பதுதான் அரசியல் சட்டம் முன்வைத்திருக்கிற ஒன்று. ஆனால் சயின்டிபிக் டெம்பர் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அரசியல் சட்டத்தினால் உறுதிமொழி எடுத்து பதவியேற்றுக் கொண்டவர்கள் தவறான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தவறான கருத்துக்களை மக்களுக்கு ஊட்டி தவறான திசை வழிக்கு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருக்கிற விபரீதமான போக்கு இங்கே வளர்ந்து வருகிறது இந்தியாவில். இவையெல்லாம் கவலையோடு கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களாகும். இதற்கு விஞ்ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் நாம் தீர்வளிக்க வேண்டும். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. உலக அளவில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை இன்றைக்கு இந்தியா பெற்றிருக்கிறது. இந்தியர்கள் என்று சொல்லுவதில் நாம் பெருமை கொள்ளுகிறோம். இந்த மகத்தான வெற்றியை நமக்கு ஈட்டி தந்தது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் போட்ட விதை என்பதை நாம் மீண்டும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அரசியல் சட்டம் குறித்தும் கவலையோடு நாம் பார்க்க வேண்டும். அரசியல் சட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை. அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிற போதுதான் இந்தியர்கள் மூடக்கருத்துக்களிலிருந்து வெளியிலே வந்து உண்மை என்ன என்பதை புரிந்து தெளிவடைவார்கள். அதற்காக அறிவியல் பூர்வமான வளர்ச்சியை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் 1, 2, 3 மூன்றிலேயும் தமிழர்கள் மகத்தான பங்கு வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் இந்த 3ஐ படைப்பதிலேயும் அடர்த்தியான பங்களிப்பை செலுத்தி இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் என்ன புலப்படுகிறது என்றால் இந்தியாவுக்கு இந்த 3 சந்திராயன் 3ஐயும் படைத்து அருளியதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் கல்வியின் தரம் இந்தியாவிற்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவுக்கு கல்வி எவ்வளவு வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் பெற்றிருக்கிறது, கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு எவ்வளவு கூர்மையாக இருக்கிறது என்பதையும் இது புரிய வைத்திருக்கிறது. எனவே அதற்காக தமிழ்நாட்டை நீங்கள் கவனத்தோடு கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சந்திராயன் வெற்றி 1, 2, 3 வெற்றி நிரூபித்திருக்கிறது, துலக்கி காட்டியிருக்கிறது. அதே மாதிரி நான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டிய ஒன்றை யூனியன் அரசுக்கு குறிப்பிட விரும்புவது, கிராமங்கள் உட்பட எல்லா இடங்களிலேயும் அறிவியல் கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட வேண்டும். அறிவியல் கருத்தோட்டத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். அதன் மூலம்தான் அரசியல் சட்டத்திற்கு நாம் நம்பகத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Honorable Member Sumidanand Saraswati. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले
मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर ये चर्चा करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। 14 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर यह चंद्रयान उतरा, जहां का वातावरण अलग ही रहता है, 200 डिग्री माइनस तक का टेम्परेचर जाता है, अंधकार छाया रहता है। ऐसे स्थान के ऊपर यान को उतारने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बना। इसलिए मैं देशवासियों को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश ऐसा देश है जो ऋषियों का, मुनियों का देश है। अभी चिदम्बरम जी बोल रहे थे, उससे पहले हमारे कई वक्ताओं ने इस विषय पर रखा। हम कई बार भटक जाते हैं। जब कोई अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो विचलित होने का प्रयास करते हैं। हम जब अपने प्राचीन साहित्य को देखते हैं, इतिहास को उठा करके देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हम अपने प्राचीन ऋषियों को देखते हैं। ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये हमारे आधुनिक ऋषि हैं। इन्होंने देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, देश का नाम समुज्वल किया है। हम यदि रामायण काल को देखेंगे, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे इस प्रकार के वैज्ञानिक थे। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो साउंडलेस था, ध्वनि रहित था। हमारे यहाँ भास्कर आचार्य का जो ग्रंथ है बृहद विमान शास्त्र, मैंने उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ा है एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते। उसमें जिस प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है, आज भी साउंडलेस विमान हम तैयार नहीं कर पाए हैं। और रात्रि को जो विमान उड़ते थे तो अंधेरे के अंदर भी दिखाई देता था। तो उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों को भी अभी अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे के जो दर्शन के विद्वान थे, गौतम थे, कणाद थे, कपिल थे, उन्होंने परमाणु के ऊपर और अणु पर जो विचार किया, हमने उन दर्शनों को कई बार नास्तिक दर्शन कह दिया। जिस ग्रंथ के अंदर यदि धर्म की चर्चा ने, हम उसको नास्तिक कह देते हैं, और यदि धर्म की चर्चा होती उसको हम अंधविश्वास कह देते हैं। ये दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, एक पक्षी जैसे उड़ान भरता है, पक्षी के एक पंख को बांध दीजिए, एक पंख को बांधने के बाद पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण विकास करना चाहता है, कोई भी देश पूर्ण विकास करना चाहता है, वो बिना अध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म से विल पावर मिलता है। विल पावर क्या करता है? जैसे आपने देखा, हमारा 1 साल पहले एक यान हमारा असफल हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साइंटिस्ट के बीच में गए और उनकी पीठ थपथपाई, उनको धीरज बंधाया। यदि हम उसमें निराश हो जाते, हताश हो जाते और हमारे अंदर विल पावर नहीं होती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। और उसका परिणाम यह निकला कि विल पावर के कारण, आत्मबल के ऊपर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते 1 साल के बाद में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखा दिया जिसको पूरी दुनिया ने लोहा माना है। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जहां हमारे साइंटिस्ट माने सोमनाथ जी की टीम ने काम किया, उसके साथ साथ में जो और भी लोग थे, जैसे प्राय मैं कई बार एक निवेदन किया करता हूं, गाड़ी है, कई करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसमें से अगर बाल कर निकाल दिया जाए तो उसमें टायर में हवा नहीं ठहरेगी। तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इंजन हो और साधन हो, यदि वाल्व की कीमत को हम नहीं समझेंगे तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इस काम के अंदर एक छोटे से छोटा साइंटिस्ट, आज हम इस भव्य भवन के बीच में है, नई पार्लियामेंट में है, इसमें एक सामान्य कर्मचारी भी
जिसने छोटा सा काम किया है, जो पानी पकड़ाने का काम करता था, सीमेंट और गारा बनाने का काम करता था, पत्थर पकड़ाने का काम करता था, गाड़ी में पत्थर लादने का काम करता था, उसका भी इतना योगदान है जितना किसी आर्किटेक्ट ने इस भवन को बनाया और इंजीनियर ने इसमें सहयोग दिया। ठीक इसी प्रकार इससे हमारा जो ये यान चंद्रमा पर पहुंचा, उस चंद्रमा पर पहुंचने तक यान में जितने लोगों का सहयोग रहा है, एक सामान्य कर्मचारी जो उनकी टीम के अंदर काम करता था वो उसमें भागीदारी था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश तो इतना समृद्ध था, हमारी संस्कृति में स्पष्ट आता है, एत देश प्रसूत से सकाशाद अग्रजन्मन है स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वी सर्वमानवाः। हमारे देश के ऋषियों के चरणों में तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, अभी G20 हुआ, माने प्रधानमंत्री जी जहां खड़े थे उसके बैकग्राउंड के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का एक बैकग्राउंड दिया, इसलिए दिया कि दुनिया के विद्वान आए थे, दुनिया के नेता आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे और आए थे। उन्होंने आकर के जब उसको देखा और उनको बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि हमारा देश कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है। बीच में गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े गए और गुलामी होने के कारण हम विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो प्राचीन धरोहर थी उस धरोहर का स्मरण करेंगे, उसका स्मरण करके उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे देश ने उड़ान भरी है और अभी चंद्रमा के साथ साथ में सूर्य की तरफ बढ़े हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। मैं जब प्राचीन साहित्य को पढ़ता हूं तो प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि अन्य ग्रहों के ऊपर भी मनुष्य हो सकता है। इस पर हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को मैं सबसे बड़ा आभार इसलिए करना चाहूंगा, कोई भी वैज्ञानिक किसी काम को करता है फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वो आगे के लिए रिसर्च का काम छोड़ देता है, अनुसंधान का काम छोड़ देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जिस काम को किया है चंद्रयान 3 के ऊपर और दूसरे इसके ऊपर, प्रारंभ से लेकर के देश की आजादी के बाद में जब से इस काम इसरो का काम प्रारंभ हुआ या हमारी जितने अन्य रिसर्च सेंटर हैं उनमें काम हुआ, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर से आज ये महिला बिल आया है, मैं उन बहनों को भी, महिलाओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इसमें शामिल थी। हमारी नंदिनी हरिनाथ, डॉक्टर रितु कारीधाल, श्रीवास्तव जी, मिनल जी, रोहित, अनुराधा टीके सहित अनेक महिलाएं जो इसमें थी। मेरे क्षेत्र की भी एक बेटी इस टीम के अंदर सम्मिलित थी। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि हम अपनी प्राचीन अध्यात्म की धरोहर को लेकर के, प्राचीन दर्शन शास्त्र वेदों की धरोहर को लेकर के और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। कई बार हमें ये कहते साहब आप इनका धन्यवाद क्यों कर रहे हो, किसी के किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञता होती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि इस दुनिया में सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में बजट दे करके, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती से यहां पहुंचे, मैं प्राय सुबह टेलीविजन नहीं खोलता हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने टेलीविजन खोला और प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु गए और वैज्ञानिकों के सामने जब जाकर के कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। देश की, दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता और हमारे साइंटिस्ट के सामने जाकर के जब उनके सामने कहता है मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट का कितना प्रोत्साहन बढ़ा होगा, कितना उत्साह बढ़ा होगा। और उत्साह बढ़ने पर ही आदमी काम करता है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करूंगा कि हमारा देश दुनिया की बुलंदियों को नापे और ये देश आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्राचीन ऋषियों के जो भाव थे वो भाव सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। यादव। Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak today. Sir, the moon signifies wisdom, intuition, birth,
death, and reincarnation, and a spiritual connection. Science and spirituality both are the safeguards of humanity and mankind. Spirituality, science, and philosophy are all interlaced and interconnected. Sanatana Dharma is all about spirituality, sir. Moon also signifies powerful feminine energy. And sir, yesterday we passed the Women's Reservation Bill. And sir, I would like to congratulate all the women of the country. And I would also repeat the demand of the Samajwadi Party that the OBC women should have reservation in the reservations for Women's Bill. Because sir, भाजपा का जो अस्तित्व है, जो भाजपा सरकार में है, वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से ही है और हम ओबीसी महिलाओं का हक, सम्मान और अधिकार और उनका राजनीतिक जो उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए सर, उससे हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं. Sir, as we know, the Chandrayaan 3 landed successfully on 23rd August 2023 on the moon's south pole. With this great achievement, India has also become a member of Artemis Accord. I would like to congratulate all the scientists of ISRO from its very inception. Vikram Sarabhai ji, Satish Dhawan ji, Homi J. Bhabha ji, APJ Abdul Kalam ji, G. Madhavan Nair ji, Radha Krishnan ji, E.V. Chitnis ji, K. Shivam ji, and the current ISRO chief, S. Somnath ji, and all the supporting technicians and all the supporting staff. This achievement belongs to all the scientists and the community alone. And let us not lower our dignity in taking the credit of our dear scientists of the country. Let us all take pride in it. Such a space program have always been an instrument of inspiration for the country and a tool of developmental aspirations of the country. I would just like to say that it is a movement of great pride for the country, for each and every citizen of this country. And we salute to all the scientists. Jai Hind, sir. Very good. Very nice. Jagat Rakshakan. Thank you, Mr. Renowned astronomer Galileo from West had discovered moon in 1678. But our Tamil poet and scholars have spoken about the moon mission way back in 2nd century itself, which can be seen in our Sangam literature. Tamil literature is a testament to the fact that Tamils know the scientific method of measuring the planets and their orbits in the sky, their movement and time scales. Tamil Sangam poet sung about various planets and galaxies in the sky, including the moon. In 1930s, our Tamil poet Mahakavi Bharatiya sung about the moon in his new Aathichudi that we will explore more. Also, our great Tamil poet Kavingir Kannadasan, who predicted the day in the early 1966, stated in his song, Sandranai Thedi Sendu Kudiyirupoma, Tamilukku Seidi Solli Azhaithu Kolvoma, which means we will go in search of the moon and live there, and we will inform our Tamil language to come there and be with us. This is about our love for our language, which is equal to our life. Our great leader and the Prime Minister, Madam Indira Gandhi, pioneered this mission and sent Sri Rakesh Sharma to the space in 1984. He was the first Indian to go to the space. We all remember the memories of the Sri Rakesh Sharma briefing Madam Indira Gandhi about his feeling of seeing the beauty of Mother India from this space. We have a long history of our initiative to explore the moon. Whether it is a history of the politics, South is always special. India's third lunar mission, Chandrayaan 3, made India the first country to successfully land near the moon's south pole. Besides the study, Chandrayaan 3 is going to make
about moon's history and the search of water, ice in the moon and other materials. It is making me feel very proud about our nation. India may be the fourth nation to launch this mission and the third successful accomplish this. But it is the first developed nation to achieve this as the other all developed countries. We are not only strong technologically, but also the technique such as soft landing, which ensure achieving this mission at the lowest possible cost. No country has ever attempting the soft landing on moon's south pole. The US, China and Russia have attempted the soft landing on moon's equatorial region, but attempting the same of moon's south pole region is considering difficulty due to the rough terrain. As we have achieved this, it will open new chapter for India. Chandrayaan mission entire cost is roughly 650 crores, whereas Hollywood film Avatar budget was around 1,970 crores. This is the proof of testament our self-reliance and the strength of our own technology and invents, which was possible on account of Make in India initiatives strategic alone, which India emerging as the world's fifth largest economy, we are able to show countries. Pros in security and technology. The new satellite center in Thoothukudi, Kulasegarapatnam, which you are planning to inaugurate. It will go in a long way in promoting the launch of lighting space craft and also bring the much needed foreign exchange. The success of Chandrayaan 3 could contribute significantly Indian space economy projected to be worth 13 billion by 2025. And I wish all the success of our first solar mission, Aditya 1. A pride our beloved Tamil Nadu Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, whose government is also contributed lot of Dravidian models. Mission Director Thiru Veeramuthuvelu of Chandrayaan 3 and Mission Director Aditya 1, Tirumadi Nisha Sharij. Both of them are from Tamil Nadu and significantly they completed their primary education from Tamil Nadu government schools in their mother language and Tamil, and rose to such a height and brought pride to our Indian and Tamilians. We are thankful to remember of our Tamil scientist APJ Abdul Kalam, Dr. Mailswamy Annadurai, popular known as a moon man of India, and is a proud moment. Dr. Sivan, Dr. Veeramuthuvel and other Tamil scientists. I appreciate them and we are proud to our state being part of such a commendable mission of our country. Thank you very much. Thank you. Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब मुझे इस मौके पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, चंद्रयान 3 की जो कामयाबी से कुतुबी जनूबी जो चांद का है उस पर जो लैंड किया, सर उस पर बजा तौर पर सारे मुल्क को फख्र होना चाहिए। जनाब, हमें उन साइंसदानों पर फख्र है जो इस मिशन के साथ एसोसिएट रहे। छोटे से छोटा जो भी एक साइंटिस्ट या जो टेक्नोक्रेट था उससे बढ़कर जो चेयरमैन है इसरो के, सब मुबारकबादी के मुस्तहिक है। जनाब, जब हम इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए जो सरकार का हक बनता है कि हम उसकी सराहना करें और उसको मुबारक दें। प्राइम मिनिस्टर साहब या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो इसके साथ वाबस्ता रहे, इनका भी वही हक बनता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें सबको ये ज़हननशीन करना चाहिए कि ये कंटिन्यूटी का मामला है। जनाब, जो भी ये सफ़र हमारा रहा खला में, तो ये सफ़र की शुरुआत हो गई आज से 50-60 साल पहले, जनाब, जब इसरो का क़याम बामल लाया गया।